हेलो हेलो। आवाज आ रही है? इतने टाइम से यूट्यूब नहीं किया है ना, वो आदत छूट जाती है यार। कैसे हो आप लोग? नाइस टू सी यू हियर। सॉरी फॉर द एब्सेंस बट समटाइम्स यू नीड अ ब्रेक। एक्चुअली हुआ क्या था, आफ्टर दैट यूनाइटेड गेम ना, यूनाइटेड आर्सेनल वाला गेम, मेरा डोपामीन, मेरा हाई इतना ज्यादा चला गया था, मुझे लगा इससे तो ऊपर कभी जा ही नहीं सकता। सो यू नीड अ ब्रेक टू कम डाउन टू रियलिटी, to calm down a little bit and approach things in a nice, sensible manner. But how are you guys? It's so nice to see you, all of you here, man. Tracy, Siddharth, Yashpal, Raghav, Aqua, Anirban, General Trossard. मुझे पता है क्रिकेट शुरू होने वाला है। यस यस ऑफ कोर्स, जिसको क्रिकेट देखना है जाइए जाइए, नो प्रॉब्लम्स एट ऑल, नो प्रॉब्लम्स एट ऑल। ऑफ कोर्स इंडिया वर्सेस पाकिस्तान है यार, तीसरी बार हो रहा है इस टूर्नामेंट में, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, जिसमें सिर्फ हमें इंडिया की बैटिंग करने को मिल दिखते हैं। इंडिया की बॉलिंग नहीं दिख रही, पाकिस्तान की बैटिंग नहीं दिख रही। बट यार whoever whatever sports you prefer, you can always watch cricket। तो यार 6-7 घंटे का चलेगा भी, provided it does not rain again। Why Benfica jersey Paksh bhai? Because this jersey is absolutely beautiful यार Tracy, it's absolutely sundar, beautiful। And the best thing is that now you can write Haaland and Hoyland। मैंने घुस घास के स्पैम फिल्टर्स चेक चुक करके सब कुछ एडजस्ट कर करके नई सेटिंग्स लगाई हैं, एंड नाउ यू कैन राइट हॉयलैंड एंड हालैंड एंड जिसमें भी है। आप लंड भी लिख सकते हैं, टू बी ऑनेस्ट। बट कोई बात नहीं। हाउ आर यू यार? 41 ऑफ यू आर हियर। मैं अभी लाइक्स वाइक्स के लिए तो नहीं कहूंगा, बट लाइक कर दो वीडियो को यार। यस, सी यू वोंट गेट बैंड एनी मोर। यस, नो मोर बैनिंग, नो मोर बैनिंग, नो मोर बैनिंग एट ऑल, नो मोर टाइम आउट्स। हाउ आर यू जस्टिन? सो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं फुटबॉल की स्ट्रीम करूं, फिर मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं चिल स्ट्रीम करूं, फिर मुझे समझ नहीं आ रहा था गेमिंग स्ट्रीम करूं। मैं सोचा तीनों का मिला के कर लेते। सो द आइडिया ऑफ द स्ट्रीम इज वील टॉक अबाउट एवरीथिंग, यू नो, चिल स्टफ एंड नॉन फुटबॉल स्टफ। बट इफ यू वांट टू डिस्कस फुटबॉल, बिकॉज प्लेंटी हो चुका है फुटबॉल में भी इस इंटरनेशनल ब्रेक में, इंजरीज से लेके ओ बैन हो गया ट्रेसी। या मैंने तो टू बी ऑनेस्ट ठीक ही किया था। लॉल, सॉरी सॉरी सॉरी, फिर मेरे को ठीक ही करना पड़ेगा। um, या सो फिर आप फर्स्ट नेम ही लिखिए। मेरे को लगा मैंने फिक्स कर दिया था, अपेरेंटली नहीं किया है। um, ये स्टूडियो पे चेक करते हैं ये यूट्यूब, क्योंकि मैंने स्ट्रीम एलिमेंट्स का तो फिक्स कर लिया था। अब मुझे नहीं पता कि ये वो ना हो कि यूट्यूब का खुद का जो कंटेंट फिल्टर है, वो चलता है, क्योंकि मुक्तेश के उस पे भी चलता ही रहता है वो, टू बी ऑनेस्ट। Debated. Yeah, there's plenty to talk about यार, of course। फ्रॉम फुटबॉलर्स के केसेस से लेके बहुत सारी चीजें हो रही हैं, बहुत सारी चीज। लेट मी सी कौन बैन हुआ है। डिलीटेड बाय स्ट्रीम एलिमेंट्स, डिस्गस्टिंग डिस्गस्टिंग स्ट्रीम एलिमेंट्स। यू स्कैम्ड मी। व्हेन माइनक्राफ्ट सर्वर, यार देखो टू बी ऑनेस्ट मेरे को लगता नहीं कौन इस स्ट्रीम में। ओके, 61 ऑफ यू आर हियर। हाउ मेनी ऑफ यू रेगुलरली प्ले माइनक्राफ्ट? लाइक when you have nothing better to do, you get on Minecraft and you get on a server and you hang out with friends. Because Raghav's idea was that we can make a virtual hangout in Minecraft and build things, which I think is a good idea. I just think it's not the community for it, मेरे हिसाब से। Daksh bhai, please do that nostalgia streams. They were awesome. Yeah, I am again planning to do nostalgia streams. The idea was to make a nostalgia stream with nostalgic ads, um, जो हम डेफिनेटली 2000s एंड 2010s में देखते थे वो एड्स। एंड देन उनको हम साथ वॉच करेंगे, बट उसमें ना कॉपीराइट आ जाएगा, टू बी ऑनेस्ट गाइस, एंड उसमें मैं कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं चाहता, टू बी ऑनेस्ट। सो वी कैन सी, आई ट्राई व्हाट टू डू। लाइक द स्ट्रीम, जैसे अनिर्बन कह रहे हैं, थैंक यू अनिर्बन फॉर रिमाइंडिंग पीपल। लेकिन मोहक भाई के चैनल पे तो अलाउड है रासमस अर्लिंग, पता नहीं क्या है यार। मेरे को चेक करना पड़ेगा। ये स्ट्रीम एलिमेंट्स का बैन है तो फिर स्ट्रीम एलिमेंट्स की ही कोई गलती है। दक्ष भाई प्लीज, हाँ हो गया, ऑल राइट। हम लिख सकते हैं लर्न ऑन, हाँ आप लोग लिख सकते हैं। दक्ष भाई, व्हाट डू यू थिंक अबाउट हैंसी फ्लिक बीइंग सैक्ड? यार इट वाज कमिंग, एंड द फैक्ट इज दैट ही इज द फर्स्ट मैनेजर इन जर्मन टीम्स इतने साल की हिस्ट्री में, द फर्स्ट मैनेजर एवर टू गेट सैक्ड फ्रॉम द नेशनल टीम। इनसेन।
ही इज अ गुड मैनेजर मैन, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। बट इंटरनेशनल मैनेजमेंट ना एक अलग ही गेम होता है मेरे हिसाब से, क्योंकि इंटरनेशनल मैनेजमेंट में यू हैव टू, नंबर वन, पहली बात, आपको किसी फैन बेस को नहीं करना, आपको कंट्री को रिप्रेजेंट करना है। सो दैट्स नंबर वन, इट्स अ वेरी वेरी बिग प्रेशर, क्योंकि कंट्री के साथ तो प्राइड होती है। ऑफ कोर्स यू फील लव एंड अफेक्शन फॉर योर क्लब यार, बट कंट्री के साथ आप नहीं छेड़छाड़ कर सकते। देन इट कम्स टू सिलेक्शन। नाउ हु डू यू सेलेक्ट? डू यू सेलेक्ट प्लेयर्स हु यू थिंक are best for your system, are best for understanding your tactics, or do you select players जो फॉर्म में बड़े अच्छे हैं, आर ग्रेट प्लेयर्स एंड एवरीथिंग ब्ला ब्ला ब्ला, एंड एक बार आप सिलेक्शन कर लेते हो, आप ट्रांसफर्स में उनको चेंज नहीं कर सकते। इतनी बड़ी अजीब बात है। आई मीन अजीब बात क्या, दिस इज फैक्चुअल यार, एंड दिस इज व्हाई इंटरनेशनल मैनेजमेंट इज नॉट इजी। बट देखो यार, हैंसी फ्लिक का सैक होना तो यार बहुत ही है। शांतनु को इस टीम के लिए शैडो बैन कर दो आप। नहीं नहीं नहीं, शांतनु को नहीं शैडो बैन करे, ही डिजर्व्ड इट। क्यों क्यों उसको डिजर्व क्यों करता? आई थिंक इज अ नाइस गाय, आई थिंक ही इज अ ग्रेट मैनेजर। आई थिंक बायर्न म्यूनिख के साथ उसने जो किया था बहुत अमेजिंग किया था। बट yeah, man, national management is a different thing altogether. You can't make too many adjustments, and once your team is in, it is in. And no matter who you select, you will always have people who will criticize you. ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ. Who is the striker in Germany? I think Kai was playing as striker अभी जो international friendly हुए थे. I would have wanted somebody like Fulkrug. I would have wanted somebody like Adeyemi. बहुत सारे हैं। विल नागल्समैन बी गुड एट जर्मनी? आई थिंक देखो, जो स्टैंडर्ड्स जर्मनी के हैं ना, व्हेन इट कम्स टू द नेशनल टीम, आई थिंक नागल्समैन इज वेरी वॉलेटाइल फॉर इट। दे नीड somebody not with fresh ideas, but somebody who at least for a while can bring stability. Now मैंने मानस निधि की आज वाली वीडियो नहीं देखी है, but I am assuming they will say कि Klopp will never go and should not go, but I genuinely believe, and again, this is not a hate towards Liverpool. How can it be hate towards Liverpool? It's a fucking opinion. I think Germany should genuinely make a concerted effort to go for Jurgen Klopp, यार. I mean, इस बंदे का इतना अच्छा track record है. He has a history of getting the best out of the players at his disposal. His tactics are very attacking and forward thinking. The question is, the pieces that Klopp has at Liverpool, he will definitely not have like for like at Germany, right? Of course, आप कह सकते हो कि एक पेसी विंगर हो जाएगा अगर आप साने ले लोगे, बट साने इज नॉट साला। आपके पास एक ट्रेंट जैसा प्लेयर नहीं होगा। सो या इट्स स्ट्रेंज मैन, मतलब हु डू यू गेट, एंड सो डू यू जस्ट कमिट टू द फैक्ट कि अब हमें पूरी जर्मन टीम की आइडेंटिटी चेंज करनी है? आई थिंक सो। आई थिंक आपको मुलर को छोड़ देना चाहिए। इट्स टाइम टू मूव ऑन फ्रॉम दोज गाइज। बट देखो यार, ये साइक्लिकल होता है इंटरनेशनल फुटबॉल भी। एक टाइम पे हम बेल्जियम की गोल्डन जनरेशन की बात कर रहे थे, इंग्लैंड की गोल्डन जनरेशन, अभी सेकंड गोल्डन जनरेशन हम कह रहे हैं। स्पेन का इतना ज़्यादा होता था। यू कैन सी टीम्स फ्रॉम एशिया लाइक जापान राइजिंग। यू कैन सी सम वेरी रेगुलर्स लाइक फ्रांस जो लुक अनस्टॉपेबल, एंड नेदरलैंड्स हु आर डूइंग मच मच बेटर यार। आपको दिख रहे हैं यंग टैलेंट्स इमर्जिंग फ्रॉम डेनमार्क एंड नॉर्वे एंड स्वीडन, एंड तो आपकी नॉर्डिक कंट्रीज भी बेटर हो रही हैं, एंड इंग्लैंड तो चलो चलो मैनेजर की बात है। सो मे बी इट्स ऑल साइक्लिकल। देर ऑल्सो कंसिडरिंग वैन हाल, माई गॉड। नो प्रॉपर नाइन फॉर जर्मनी लाइक गोमेज और क्लोसे, या फुलक्रूग है, बट मुझे नहीं पता कि फुलक्रूग को इतना ट्रस्ट क्यों नहीं करते। वर्ड्स मुसियाला हैज ग्रेट ड्रिबलर्स, बट बताओ, it is not the system that, I mean, it is kind of the system, but I don't know who is the one who can get the best out of these guys, यार। Maybe और कौन हो सकता है? मार्को रोज? I think Germany should make a concerted effort to either go for Pep or Klopp if they want to come back again. Italy will draw with North Macedonia. अरे बाप रे। When will you stream FIFA next? Missing those streams. Soon, my friend, soon. कल आई हैव टू हेल्प माई गर्लफ्रेंड विद सम ऑफ अ वर्क। मेरा प्लान था कल करने के लिए। मोस्ट लाइकली थर्सडे को हम एक फीफा स्ट्रीम कर सकते हैं, नॉट एन इशू। किमिक गोरेट्स्का गनाब्री भी हैं यार। बताऊँ क्या है? Clearly, these players need a change. So either a change in coach will help them, or we need to change the personnel for Germany. Um,
Manas Bhai said it right. Everyone loves Klopp in Germany and he has an identity, something which is gone from Germany team. तो क्या है यार? I don't think Germany के पास कभी I agree with what Manas is saying, Manan. But I don't think historically Germany में identity थी. You tell me who was this flair player in Germany? There was never a flair player. Germany was about this cohesive unit for me. Germany एक ऐसा efficient unit था, एक machine थी जो सबसे रूथलेस एंड इफेक्टिव वे में गेम जीतेगी. वॉकिम लो, नो पर्सनालिटी. ठीक है, वो बस अपनी नाक रगड़ के फिर उनके बुगस चबाता था अपने, या फिर ही डिग हिज हैंड्स इनटू हिज पैंट्स एंड देन स्मेल देम. Muller, again, trust me, very few German people have that sort of a personality. Germany में ऐसा कुछ था नहीं मेरे हिसाब से. Klopp will definitely be a very very big positive मेरे हिसाब से. But yeah, Pep will manage England eventually. I think the English FA will love to have him. Will he want to stay? I don't know. Definitely don't see him joining Spain because of Catalonia. Maybe Italy? अभी इटली का मैनेजर कौन है? अभी मैंचीनी इज गॉटन बैक इनटू मैनेजमेंट समवेयर ना, मैं भूल गया कहाँ पे. जर्मनी ऑल्सो लैक क्वालिटी फुल बैक्स. आई एग्री. आई एग्री. नहीं नहीं, आइडेंटिटी का मतलब फ्लेयर नहीं होता, बट प्ले स्टाइल भी क्या था जर्मनी का? यू एक्सप्लेन टू मी उत्कर्ष, व्हाट वाज जर्मनीज प्ले स्टाइल? बिकॉज Daksh bhai, when you bring a person with attacking mindset in Germany, it's not good for the rest of the world. Ha ha. Spalletti is Italy commander. Thank you so much, Anirban. But what is Germany's identity? Okay, if I ask you, in the last 10 years, if you had to explain what is Germany's identity, 30 सेकंड का कूल डाउन है. 30 सेकंड में कोई अच्छा सा पैराग्राफ लिख के बता सकता है. Then don't you think somebody has Nagelsmann? It is a gamble again, but that's the thing. Do Germany want to go for a gamble? Euros Germany में है, by the way. ठीक है? Long ball. I promise you, you will have 6 responses with all 6 different people saying different things about what was Germany's identity. आपको, मैं तो कहता हूँ आपको वॉक इन लो से पहले तक का भी सोचना आप सोच लो. बट देर इज नो set play style for Germany. Is it possession based? You can say so, but hmm, I don't know. Marcus Royce be hai most underrated player. I think they need to move on from this crop of players. I think you need to start promoting Musiala. I think you need to start promoting Wirtz. I think you need to remove Muller. You need to remove Neuer. आपको धीरे धीरे ये सारी चीज़ों को करना पड़ेगा. देखो, मैं इतना इंटरनेशनल फुटबॉल देखता नहीं हूँ, सो व्हेन आई आस्क यू व्हाट इज जर्मनीज आइडेंटिटी, मैं जेन्युइनली समझना चाहता हूँ. Zidane will be good. I don't know, man. It is hard to nail down international football because international football is less guided by the players and more guided by the managers. मेरे हिसाब से. How they succeed, it is pure efficiency. I think they had this amazing group of players जो एक साथ आए थे. From Neuer to Muller, Schweinsteiger, Lahm, ये सब लोग आए थे. And these guys were absolute pinnacle अपने क्राफ्ट पे. एंड मुझे लगता है इनको एक साथ काम कराने के लिए आपको डिसेंट बंदा चाहिए था rather than anything else. So I don't know, man. अरे Vakar is also here. German identity similar to Barca's UCL identity. Any philosophy you may bring, group stage से अरे Vakar लमाओ. ये क्यों मैसेज रिट्रैक्ट कर दिया आपने उत्कर्ष? खैर कोई बात नहीं. ओजिल भी था. अरे देखो यार, जर्मनी का तो है ही है. बट फॉर मी, I think you need to develop a coherent play style, and I think you need a manager to develop that coherent play style. And that's about it. What do I think about Gareth Southgate? The manager has a ceiling, यार. He knows. देखो बताओ क्या है, हम कहते हैं कुछ managers cup managers होते हैं. Exactly, clinical cutthroat football. कुछ managers को हम कहते हैं कि उनकी ना एक ceiling होती है, and I think Southgate has reached his ceiling. Southgate एक ऐसा type का बंदा है who knows how to negotiate a win when it comes to ये क्या है? Okay. So I was saying कि Southgate knows how to get to cup competitions. कभी-कभी क्या होता है, he just gets outsmarted मेरे हिसाब से. But बताऊँ क्या है?
इंग्लिश फैंस को लग रहा है, एटलीस्ट जितना मेरे को समझ आता है, कि उनके पास एक एक्साइटिंग क्रॉप ऑफ पीपल है. दे आर फास्ट, दे आर डायनामिक, दे आर स्किलफुल, दे आर टेक्निकल. पहले इंग्लिश फुटबॉल की आइडेंटिटी यूज टू बी मोस्टली फिजिकल, स्ट्रॉन्ग, लॉन्ग बॉल, फिजिकली बुली करके गोल मार दो एंड एवरीथिंग. इस बार टेक्निकल ब्रिलियंस बहुत शाइन करती है. आपके पास रैशवर्ड है, साका है, फोर्डन है, ग्रीलिश है. आपके सेंटर बैक्स आर वेरी टैक्टिकली डायनामिक एंड बहुत अच्छा खेलते हैं. स्टोन्स हो गया आपके पास. यू हैव अ डिसेंट क्रॉप ऑफ कीपर्स एज वेल हु आर कंफर्टेबल प्लेइंग आउट फ्रॉम द बैक एज वेल. ठीक है. तो आपके पास एक बहुत अच्छा स्क्वाड है जिसमें फिजिकलिटी, टेक्निकल ब्रिलियंस एंड मैच विनिंग मोमेंट्स बहुत हैं. मैंने जब यूनाइटेड आर्सेनल प्रीव्यू किया था, मैंने कहा था यूनाइटेड के पास किलर्स है. रैशवर्ड इज दैट किलर मैन. हैरी केन इज अ लीथल फिनिशर, ही इज अ किलर. बट दीज गाइज आर ऑल्सो ग्रेट टेक्निकल प्लेयर्स. तो इंग्लिश फैंस का मेरे हिसाब से ये चल रहा है कि यार हमारे पास इतने बड़े प्लेयर्स हैं, इतने ज्यादा अच्छे प्लेयर्स हैं, तो हम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? व्हाई आर वी नॉट प्लेइंग एक्साइटेबल फुटबॉल? नाउ एक्साइटेबल फुटबॉल आपको पिच पे देखना है, स्कोर लाइन पे नेसेसरी, बिकॉज यू वुड सी इंग्लैंड ने जब वर्ल्ड कप हुआ था ग्रुप स्टेज में तो हार्डली स्ट्रगल करे थे वो. उन्होंने वेल्स को बीट कर दिया था, यूएसए को बीट कर दिया था, ईरान को भी 4-5 गोल से हराया था. सो मेरे हिसाब से दिस गोल्स आर नॉट द इशू. इट्स जस्ट इट्स सच एन अनइंस्पायरिंग ब्रांड ऑफ फुटबॉल जो इंग्लिश फैंस को लगता है कि यार कुछ देख नहीं रहे हैं क्या. थ्री एट द बैक खेल रहे हो, अटैकिंग फुटबॉल खेलो, पुट योर नीज ऑन द ओपोनेंट्स नेक यार, उनको चोक आउट करो, डोमिनेट देम, असर्ट योरसेल्फ. एंड ये मैनेजर नहीं कर पा रहा है, एंड दैट्स द थिंग. Southgate does not know what technicality. What does Southgate do? Southgate maximizes the attacking talent he has, and how he does that is having very defensively solid players जो एक कॉम्पैक्ट लाइन में डिफेंड अच्छा कर सकते हैं. आपके पास कीरन ट्रिपियर हो गया, आपके पास हैरी मगवायर हो गया. जो मगवायर might not be the greatest stopper or sweeper or anything, but he's a good guy when it comes to compact defenses. अगर आपके बॉक्स पे अटैक होते रह रहे ही विल बी द वन विद दिस बिग हेड जो बॉल को क्लियर कर देगा. ठीक है. सो ऐसी ही बात है कि ही ट्राइज टू मैक्सिमाइज अ कॉम्पैक्ट यूनिट जो जल्दी से जल्दी अटैक में भाग, एक जो हम ट्रांजिशन कहते हैं, मेरे हिसाब से वही है. ही इज ट्राइंग टू मैक्सिमाइज दैट अटैकिंग टैलेंट. अब इस अटैकिंग टैलेंट से हैरी केन भी ड्रॉप इन करके he will find those pacey wingers in Rashford and Saka. Although Rashford को बेंच पे रखा था, ग्रीलिश को कभी खिलाता है, तो यार वही है. मतलब इट्स जस्ट uninspiring football. They will win. They will get to 2 finals and everything, and that is his defense. And it's a solid defense, by the way, because you would call England chokers much before that as well. Because England तो उस स्टेज तक पहुंच नहीं पाता था. And Southgate का डिफेंस होगा, my football works. It's not beautiful, it's not attractive, it's effective. जो हम लुइस एनरिके के लिए भी कह रहे थे कि पास 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 इतने सारे 1000 पास करके क्या फायदा जब आप बॉल ही नहीं डाल पा रहे हो. बट साउथगेट का है कि देखो, यू माइट नॉट लाइक दिस ब्रांड ऑफ फुटबॉल बट इट विंस यू गेम्स, एंड दैट्स व्हाट आई वांट. टॉक अबाउट पॉलिटिक्स. भाई ये स्ट्रीम बंद हो जाएगी फिर. दक्ष, विच इंटरनेशनल टीम डू यू सपोर्ट? आई सपोर्ट, मेरा पर्सनल फेवरेट तो ब्राजील है, बट वो भी यार मैं नॉस्टैल्जिया मर्चेंट ही हूँ. आई रिमेंबर द ब्यूटीफुल फ्लेयर जो ब्राजील खेलती थी जिस फ्लेयर के साथ. अभी इट्स सॉर्ट ऑफ अ रीइन्वेंशन, बट जिस तरह से टैलेंट निकल रहा है, मस्कार्टो, विक्टर ओके एंड एवरीथिंग, अच्छा लग रहा है थोड़ा सा. देयर इज होप. आई दिस वर्ल्ड कप मैं चाहता था. आई नो ऑफ कोर्स मेसी जीत गया, बहुत अच्छी रोमांटिक स्टोरी है, बट आई रियली रियली वांटेड नेमार वर्ल्ड कप जीत जाए. बिकॉज जब नेमार गया भी सऊदी अरेबिया, एंड यू सीन जिस टाइप की भी वीडियो सबने निकाली हैं, थीम सिमिलर है. द प्रिंस हु डिड नॉट बिकम किंग, एक सॉर्ट ऑफ अनफुलफिल्ड पोटेंशियल वाली बात है. एंड मुझे नेमार के साथ हमेशा वही लगता है कि उस बंदे की ना कहानी अधूरी रह गई है. एंड आई वुड रियली रियली वांट कि नेमार ना कुछ बहुत मेजर जीत जाए इन हिज लाइफ. ही इज वन व्हाट, ही इज वन ला लीगा, ही इज वन द फ्रेंच लीग, ही इज वन यूसीएल भी जीता ही है. आई थिंक ही इज वन यूरोप में काफी सारी ट्रॉफीज तो जीत गया वो. I just really wanted him to win the World Cup, yaar. Because he is honestly, since Ronaldinho, he has been my favorite player. क्योंकि यार वो बंदा खेलता था खुशी से खेलता था, मुझे लगता है.
And that is why I will always have a soft spot for Neymar. चाहे कोई कुछ भी कहे, for me Neymar will always be the third best player in the world. Not because of course यार he's not a lethal finisher like Cristiano, या फिर he's not a great, okay he's a great dribbler but let's say Messi के level पर नहीं है. But for me यार मतलब if football is meant to be played in a particular way with happiness and freedom, Ronaldinho के बाद the closest player that has shown me is Neymar. मेरे हिसाब से Ronaldinho के बाद. हाँ, ओलंपिक गोल्ड मेडल एंड कोपा अमेरिका जीता, बट वर्ल्ड कप इज हिज थिंग यार. मतलब उसने, जब मैंने उसके इंटरव्यूज देखे थे स्टार्टिंग में, उसने बोला था कि जब वो बारसा मूव कर रहा था, उसने दैट आई वांट टू विन द वर्ल्ड कप फॉर पेले. एंड आई थिंक वही है, ही हैज बीन ब्राजील्स बिगेस्ट होप सिंस पेले, एंड दैट इज द ओनली थिंग. आई रियली रियली होप ब्राजील विंस इट नेक्स्ट टाइम, जब नेक्स्ट वर्ल्ड कप हो. आई होप ही स्टेज अराउंड. आई होप उसको इंजरी ना हो, बिकॉज बंदा बहुत इंजरी से गुजरता है. ठीक है, एनीवेज. PS5 रेंट में खेला था विदाउट नोइंग टू शूट. व्हाट? नेवर नेवर वन एनीथिंग मेजर फॉर ब्राजील. वही है यार, वही है. कोपा कोपा भी जीता है, कोई कह रहे कोपा नहीं जीता. अगेन आई डोंट रिमेंबर, बट फॉर मी it is the biggest tragedy of football if Neymar doesn't win anything. Of course, if you are a Ronaldo fan, you will find it's the biggest tragedy that Ronaldo सिर्फ यूरोस जीता है, वर्ल्ड कप नहीं जीता. बट फॉर मी यार, नेमार इज फुटबॉल फॉर मी. नेमार खुशी देता है मुझे. मैं इफ आई हैड टू पुट ऑन अ कॉम्पाइलेशन ऑफ अ प्लेयर, एंड रोनाल्डिनियो वाली सारी कॉम्पाइलेशंस गायब हैं. मेसी रोनाल्डो वुड बी फन टू लुक एट, बट सबसे ज्यादा मजा मुझे नेमार की कॉम्पाइलेशंस पे आता है. द गाय oozes flair and class, man. Nah, bro, it's coming home in 2026. Yeah, the less said about that, man. नेमार वो प्लेयर है जिसने कहीं ना कहीं लोगों को दिखाया कि मेसी और रोनाल्डो के अलावा भी फुटबॉल है. हाँ, it's true. He won the Olympics with Brazil. Hello, Dakshpai. Just got into DU. Love your content. Congratulations, Aditya, man. Congratulations on to getting into DU. You'll have amazing, amazing time. Karan पूछते, what do I think about Antony situation? यार देखो, it's unfortunate. First of all, let's not think that this is a recent problem. ये सालों सालों से चलती आ रही है फुटबॉल में, मोस्ट लाइकली. अभी तो बस सोशल मीडिया की वजह से जल्दी बाहर आ जाता है, क्योंकि लोगों के पास एक जरिया है. आई एम नॉट श्योर व्हाट टू मेक ऑफ दिस एंटनी सिचुएशन. प्रूफ्स हैं, बट बड़ी कन्फ्लिक्टिंग प्रूफ्स हैं. एंड द गाय इज वेरी श्योर ऑफ हिमसेल्फ, यू नो, कि मैं इनोसेंट हूँ. नाउ दिस कुड बी मिसगाइडेड कॉन्फिडेंस, इन विच केस अगर ये गिल्टी प्रूव हो गया तो इसका तो बहुत ही कचुम्बर बन जाएगा. Historically though, and I am not saying कि ये 3-4 incidents will define everything that happens in Brazil, but historically ना, ब्राज़ील से जब भी ऐसे accusations आते हैं, most of them are false, especially against footballers and famous people. And ये सिर्फ famous people के against नहीं, ये politicians के साथ भी हुआ हुआ है. These have happened to actors as well. And in most cases, these have been proven to be false. Now, I don't know if it's a cultural thing or what, and I don't want to make it a cultural thing because that makes it racist or xenophobic, जो भी आपको कहना है. But in this case, इतना ज़्यादा conflict है, और मैं थोड़ा खुद confused हूँ, क्योंकि usually जब multiple accusers आते हैं ना आपके सामने, तो usually that means it's a pattern. But I'm honestly hoping जो भी सच है सामने आए. आई एम नॉट एज कन्विंस्ड अबाउट दिस सिचुएशन एज द ग्रीनवुड सिचुएशन. बस मेरा ये है. दैट्स ऑल आई विल से अबाउट एंटनी. Daksh bhai, what are 3 video games that you wish you could entirely forget in order to play them again? I would say Skyrim. I hope I forget everything about Skyrim and I play it again. I hope Assassin's Creed, all of them. I just forget the entire series and I play it for the first time. And Witcher. Just forget it and play it. Because, bhai, what an insane game, man. Jayesh, thank you so much for becoming a member. यार आप कौन से member बने? Welcome to Youth Academy. There's a Discord link in the community tab. आप वहाँ पे जाके Discord join कर सकते हैं. बड़ी अच्छी बातें करते हैं Discord पे. A lot of fun. A lot of fun. What is my favorite position to play football? I'm assuming that's what you mean. I like playing in the middle of the park. At least जब मैं football regularly खेलता था, I had a good pass. So मेरे शूटिंग बूट्स उतने अच्छे नहीं हैं.
For some reason, I don't know why, I can't shoot properly. Matlab, it's on target, but it's hardly with any power. Which means मतलब मेरे passes लेकिन बड़े accurate हैं. I can find a great ball. तो I like to play in the middle of the park. जब मैं और भी छोटा था, when I was in like 6th 7th, I loved playing on the wings cause जो क्रॉस डालने में मजे आते थे ना, बहुत मजे आते थे क्रॉस डालने में. बट नाउ मिडल ऑफ द पार्क, CDM CM types. Young Ronnie and young Neymar were the glamour they defined football. Young Ronnie, young Ronnie, okay, I get what you mean. But for me, Neymar, young Neymar, Santos Neymar, bhai, Santos Neymar to different gravy, bhai. That's the criteria. Why can't Marcelo be the third best? Equal joy, if not more, skillfully as well. Had the mindset, attitude that Neymar didn't show. Why the third best has to be the forward? No, it's not that Marcelo isn't the third best player or anything like that. The reason it's a forward, yeah. Um, because I think at the base level, देखो, for an intellectual argument, we can discuss कौन सी, if we had to had an intellectual discussion, हम सबको, और हम सोच रहे हैं कि कौन सी पोजीशन फुटबॉल में सबसे इंपॉर्टेंट है. ओके, लेट्स सी. आई वांट यू गाइस इन द चैट, कौन सी पोजीशन फुटबॉल में सबसे इंपॉर्टेंट है एंड क्यों? And I promise you there's not going to be a consensus because every position in its way is very important. You could describe the goalkeeper being the most important, you could describe the forward being the most important, or a defender, or a winger, or a CDM, anything. But how do you gauge that importance? Because on its merit, everything is important, right? अगर आप गोल कीपर, आप बोलोगे गोल कीपर ही नहीं होगा आपके पास अच्छा, तो आप गोल खाते रहोगे, तो फिर क्या पॉइंट, आप गेम ही नहीं जीतोगे. कुछ लोग बोलेंगे फॉरवर्ड का काम ही है गोल पे मारना. And football is all about scoring goals and not saving goals. It's mostly an offensive game rather than a defensive game, primarily. Um, like cricket, I think cricket is balanced, but I still think it is mostly a defending your wicket rather than attacking the bowler. ठीक है? If you look from a batter's perspective. And same thing, I think football में मेरे हिसाब से most people will say football is about scoring goals. Um, Defender, GK, CDM, right? So I think CM, right? तो देखो, different people will have different ideas. एक CM organize करेगा, एक CM is a link between the defense and the forward line. CDM इन दोनों का link है. So there are multiple answers for this. I think Marcelo also played with joy, but in my vision of football, football for me is about moments, and the most beautiful moments come out of two things: when the ball is in the back of the net or when team wins something. Now Marcelo fills the second criteria a lot, but मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा वेटेज मिलता है, एटलीस्ट जो मुझे सबसे ज्यादा खुशी देता है, इज जब बॉल जाती है. नाउ अगर मैं मड्रिड फैन होता और मैंने मार्सेलो को लास्ट मिनट में एक टैकल मारते हुए देख लिया और अपनी टीम को जिताते हुए देख लिया, आई बी लाइक यस लेट्स गो कम ऑन. बट इफ आई सी माय टीम स्कोर अ लास्ट मिनट गोल, वो खुशी तो मतलब मैं कंटेन नहीं कर पाता. आप लोगों ने देख लिया होगा, जब मैं यूनाइटेड वर्सेस आर्सेनल का वॉच अलोंग कर रहा था, आई वाज हैप्पी वी वर डिफेंडिंग, आई वाज हैप्पी वी प्रोटेक्टेड आवर लीड, ये कर रहे थे वो कर रहे थे. बट व्हेन डेक्लन राइस स्कोर्ड दैट गोल, व्हेन हेसुस स्कोर्ड दैट गोल, उस टाइप की खुशी भाई, मतलब मैं तो कभी कंटेन नहीं कर सकता. फॉर मी, इन माय विजन ऑफ फुटबॉल, इन हाउ माय आई परसीव फुटबॉल, आई थिंक Neymar is the third best player in the world. Of course, if you are a purist, if you just like joy and you think defense is as integral, if not more important than offense, then you can make a very sound argument कि Marcelo क्यों third best होना चाहिए. It is like this, right? Now, if you are a person जो believe करते कि दुनिया में अच्छे लोग ज़्यादा हैं, बुरे लोग कम हैं, and you're an optimist and everything, then you will obviously have a more optimistic leaning and then you will trust people more. It's one of those things. And अगर आपको लगता है कि दुनिया में cheats भरे हुए हैं, मुझे अपने आप को बचाना है and कुछ ही अच्छे लोग हैं जिनको मेरे को ढूंढना है, then of course your worldview is very different मेरे हिसाब से. How are you, Michael? Nice to see you here. I already pre-ordered, my friend. Already pre-ordered it. मैं देख नहीं रहा गेम, बट कोई अच्छा चल रहा हो तो बता देना. माय फेवरेट ब्राजील मोमेंट,
काफ़ी सारे हैं यार. I would say my earliest memory of Brazil would be El Fenomeno. अपने हेयर स्टाइल के साथ ये करते हुए. अम, बहुत मेमोरेबल ब्राज़ील के एड्स देखे हुए हैं मैंने इंटरनेट पे. बहुत अच्छा लग रहा था. देन आई वुड आल्सो से जब ब्राज़ील कोलंबिया के अगेंस्ट जीती थी, वो मेरे को बहुत अच्छा लगा था. Yeah, man. My earliest best Brazil memories are from early 2000s, man. Early 2000, 2002, 2006 and stuff like that. 7-1 Germany versus Brazil. That was painful, यार. बट मैं उस गेम में उस वर्ल्ड कप में मैं टू बी ऑनेस्ट उतना इमोशनली अटैच नहीं था किसी टीम से. आई लाइक यूरुग्वे, दैट्स अ ग्रेट टीम टू फॉलो एज वेल. स्टारफील्ड खेलो, व्हाट अ गेम. मैंने अभी तक बहुत मिक्स्ड रिव्यूज पढ़े हैं. आई विल वेट. द प्रॉब्लम इज आई विल नॉट बी एबल टू प्ले स्टारफील्ड विद मॉड्स यार, क्योंकि मैं अगर खेलूंगा तो मैं क्लाउड पे ही खेलूंगा. That's a pain in the ass, man. 2002 final, absolutely phenomenal. If that's the case, I say Pirlo is the best player. And if you think football is art and most of the artists are in the middle of the pitch, then yeah, of course you can say. You can say anything you want. This is the beauty of opinions. Nobody can take it away from you. They can just disagree with you. Can I help you with something, please? All right, Michael. What do you need help with? Uh, Play FM 23. I do play FM sometimes. I do play FM. PS5 में FIFA 23 खेला था पहली बार लाइफ में. अरे बाप रे. How was it? How was your experience here? Imagine first FIFA on a PS5 भाई. हम कब कहाँ से खेलते हुए आ रहे हैं FIFA. How do you rate Oscar's career and him choosing China? I think it's a prudent decision, man. Nobody can fault people for choosing money. We all choose money. Um, देखो यार, पैशन तो हर फील्ड में है. आपको पैशनेट डॉक्टर से लेके आपको पैशनेट इंजीनियर्स एंड फुटबॉलर्स सब मिलेंगे. um, तो वही है कि मतलब sometimes just people take it as a job and I think it's fine. How do I rate his career? If he's happy in his life, who am I to judge? Play Elden Ring. So much. I've played Elden Ring. I've finished Elden Ring. Um, what kind of socks are you wearing? Right now, I'm not wearing actually any socks. I'm wearing slips, yeah, normal slippers, जिनको ये slides कहते हैं. Um, but if I was wearing socks today morning, I was wearing gray Nikes, ankle length socks, the dry fit ones without any sweat. I hope that helps you. Daksh Pro, if you play, I'm not addicted. No, no, no. I can turn it off now whenever I want. I started supporting Germany because of Bayern. The sorry state they are in makes my heart break. Well, it like I said, it's all cyclical. Yeah, teams will rise, teams will fall, and teams will come back. I wanted to watch Zidane in his prime. Well, lucky for you, there is the thing called internet, and आप बहुत सारी चीजें अच्छे से sequentially देख सकते हैं. आई डोंट नो अगर आपको जिडान को प्राइम पे देखना है. फीफा की जो ऐप है उसमें पुराने वर्ल्ड कप्स हैं. चेक आउट द 98 वर्ल्ड कप, चेक आउट द 2002 वर्ल्ड कप, 2006 वर्ल्ड कप. आई थिंक यू कैन फाइंड जिडान इन दोस. 98 वर्ल्ड कप में था जिडान, मेरे को याद नहीं है. Do you like watches? I am trying to get into watches. I'm moving away from the smartwatch thing and going for a proper analog watch. I just, to be honest, don't know where to start. मेरा मन कर रहा है मैं आई अवॉइड द होल ब्रीटलिंग एंड ये सारी जितने भी एक्सपेंसिव ब्रांड्स हैं एंड स्टार्ट विद समथिंग वेरी कॉमन लाइक सेको मैन. उसके बाद देखेंगे. कैन यू शो योर सॉक्स प्लीज? नो माइकल, आई कैन नॉट शो यू माई सॉक्स बिकॉज आई एम नॉट वेयरिंग एनी and the ones that I wore in the morning are in the laundry and I am too lazy to get back up for it. 98 में था Zidane. 4 months, Sumesh. Thank you so much, yaar. Thank you so much for being a member for 4 months. Much love to you. And Tracy, of course, shout out to Tracy, yaar. Think Tracy ने कहा था कि आप मेरे को shout out दे देना. Oh, that insane fate. मैं भूल गया. But आप दोनों को shout out, man, if you are members now. All right. Let's move forward, yeah. Let's move forward on a little more topics. Bro, I think you quit alcohol. How long has it been? So, now I have quit alcohol over 8 weeks now. What I'm drinking right now is alcohol free. So, whenever I crave the taste, I have alcohol free, which has 0% alcohol. And it's not exactly the same thing, but the taste comes pretty close. But, you know, quitting alcohol का जो thing है ना, okay, insane fit. आपको भी shout out and Tracy को भी shout out. Now, quitting alcohol is not about never tasting alcohol in my life. I mean, you can make it about that as well. But for me, na, um,
थॉरफिन था शाउट आउट वाला, ऑलराइट, थॉरफिन को भी शाउट आउट भाई. um, for me it's about controlling the urges. Yeah, I think if something great happens, let's say Arsenal wins Champions League or Arsenal wins the Premier League or something like that happens, something grand happens with Arsenal or something grand happens in my life, I will want to go out and celebrate, and I can drink those days. The feeling, the reason of quitting alcohol for me is कि यार जब लाइफ में डिफिकल्टीज आती है ना, स्ट्रेस हो गया यार, या जैसे अभी आई फील अ लिटिल स्टक एट माय वर्क, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, मुझे स्टक फील कर रहा हूँ, काम आगे नहीं बढ़ रहा है, लाइफ में इसकी झंझट है, इसका स्ट्रेस है, पैसे की बात है, लेट्स से रिलेशनशिप इश्यूज हैं, या फिर मेरे को मॉम डैड से खुंदक है समथिंग. आई डोंट वांट टू मूव टू अल्कोहल एज एन एस्केप, ताकि मैं अपने माइंड को नम कर सकूं. And I think that is the biggest reason I'm quitting alcohol, because right now it is such an easy escape for everyone to go into drugs, to go into alcohol. मुझे नहीं करना. I want to control when I drink, and I want to have intention when I'm drinking. एक आप लोगों ने नया buzzword सुना होगा when it comes to meditation and everything. It's called intention. Now, intention means that whatever you are doing, you know why you're doing it. It's not something involuntary or whimsical कि आप बाद में सोचोगे कि यार मैंने क्यों किया, मैंने क्यों किया. For example, if I am not hungry but I just suddenly crave something sweet, मैंने आके उधर से डेजर्ट उठा लिया, um, that is whimsical. But if I want to eat some nice dessert, I should know why I'm eating, and I'm to celebrate a birthday, whatever. So, bro, like never been in drinking any of the drinks. That's good. I don't think you should, you know, care about the drinks and everything. Um, how much did you drink before I quit? I wish I could volumize it for you. But let's just say I wasn't, at least I don't think I was an addict, but I drank pretty frequently, moderately. Whenever I used to go out, I used to have at least 3 to 4, and I used to go out at least 3 to 4 times. So I don't know, maybe 9 to 15 pints a week, which is a lot to be honest. Now I think about it. इतना ज़्यादा alcohol, Jesus Christ. अब तो मेरे को समझ भी नहीं आता. So I quit. That's the power. Doing alcohol or anything when you want to, instead of doing it because you need. Exactly. You should control it. It should not control you. And that's it, man. Uh, राहुल ने 6 मारा. कंग्रेचुलेशन भाई राहुल. केएल राहुल, अरे बाप रे, तो मतलब एक आउट हो चुका है. लाइक करोगे तो इंडिया जीतेगा, बिल्कुल सही कहा यशपाल ने. लाइक द वीडियो, एंड वील स्टे ऑन स्ट्रीम फॉर अ लॉन्ग टाइम, सो वील टॉक अबाउट फुटबॉल एंड नॉन फुटबॉल स्टफ. We'll also play Tiki Taka Toe with you guys as well. What's the main motivation behind something when you want to quit a bad habit? For me, yaar, I just don't like anything having power over me. मेरे को लगता है मैं हूँ, मेरी इंडिपेंडेंट विल है, भगवान ने एक अच्छी फंक्शनिंग बॉडी एंड ब्रेन दिया है. मैं क्यों किसी को या फिर किसी चीज़ को लेट इट, व्हाई शुड आई लेट दीज थिंग्स कंट्रोल मी? एंड आई डोंट. एंड यू फाइंड वेज टू गेट ओवर दीज थिंग्स. तो मेरे हिसाब से क्या है कि जस्ट डोंट लेट एनीथिंग कंट्रोल यू. चाहे वो फूड हो, चाहे वो पीपल हो, चाहे वो अल्कोहल. अरे 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 भाई, मतलब तू क्यों पैसे दे मैं देखो अपने यूपीआई आईडी दे देता यार. बट कैसा है मोहक, नाइस टू हैव यू हियर बडी. बहुत टाइम से देख रहा हूँ तेरी भी, तू भी आजकल बड़ा स्ट्रेस्ड है, घर पे काम वाम हो रहा है और तू मूव कर रहा है. सो गुड लक विद योर न्यू सेटअप एंड ऑल यार. होप यू हैव नाइस हेल्थ एंड एवरीथिंग. Thank you for the contribution. So much love to you, mere bhai. And of course, guys, Mohawk, think 67, 66 point something K पे है. Let's get him to 67 ASAP यार. बहुत अच्छा लगेगा मुझे. I would say the guy deserves it. And इतना काम करता है बंदा, इतनी streams करता है, high engagement watching. Think the numbers should reflect the kind of hard work Mohawk puts in. Yeah. So please go subscribe to 1MUFC. The guy deserves it, man. अगर आपके पास alternate accounts है, उनसे भी कर दीजिए. Like I said, very very few people deserve a good audience. He is one of the few that deserve a good audience and a large audience. कैसा है भाई शांतनु? Nice to see you here. Late आ गया तू. Mohawk bhai, next season to Old Trafford live with Goldbridge. अरे बाप रे, Goldbridge will be so happy to be live with Mohawk.
Wait till Goldbridge finds out ना मोहक की फॉलोइंग कितनी ज्यादा है. He'll be astounded. Um, love you Mohak bhai. We all love Mohak man. We all love Mohak. 69k करा दो. 69 नहीं 690k पे हम रुकेंगे. When did you start watching Arsenal? I watched when RVP was there. I watched Arsenal two one year before the Invincible season. फिर नेक्स्ट सीजन उन्होंने इनविंसिबल कर दिया था. तब मुझे ऑफ कोर्स समझ नहीं आता था. मुझे लगता था इनविंसिबल तो सभी कर लेते होंगे, इसमें क्या खास बात है. बट देन व्हेन आई ग्रो अप आई फिगर्ड आउट कि लाइक यू नो इनविंसिबल सच अ ह्यूज थिंग. किसी ने इनविंसिबल्स वाला क्वेश्चन भी पूछा था, मैं भूल गया क्या था. इनविंसिबल इज अ बिगर अचीवमेंट. फॉर मी इनविंसिबल इज द बिगेस्ट अचीवमेंट अंटिल समबडी इक्वल्स इट. किसी ने इक्वल नहीं किया है, इट इज एन अचीवमेंट इन इटसेल्फ. Is this the Benfica jersey? Yes, it is the Benfica jersey, the away kit for this season. It's a beautiful, beautiful jersey. भाई यार 9/11 है, कोई मेमोरी है आपकी? यार कोई मेमोरी नहीं है. मुझे उस टाइम समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ, लोग इसको इतना बड़ा डील क्यों बना रहे हैं. हम स्कूल की, मेरे को याद है नेक्स्ट डे हमारा स्कूल था ना, हम सब बात कर रहे थे, तूने देखा न्यूज़ पे ये क्या हुआ, ये ट्विन टावर्स एंड एवरीथिंग. कुछ समझ नहीं आता था मुझे. But happened whatever happened, man. So yeah, it's a terrible day, but it changed the world, man. It changed the world. It changed how the world perceived everything. This is purely geopolitical. Geopolitics में होता था before 9/11 कि सिर्फ स्टेट्स ही स्टेट्स की दुश्मन है, मतलब कंट्रीज ही कंट्रीज की दुश्मन है. एंड दिस इंसिडेंट शोड कि हम सबकी जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड है वो कितनी misguided थी, because an individual can bring an entire country to its knees भाई. And ये as usual भाई, उमेश थैंक यू फॉर गिफ्टिंग 5 memberships यार. एंड अमृत डॉक, जिन लोगों को भी memberships मिली है भाई, उमेश के लिए एक बिग W इन द चैट हो जाए यार. बिग W इन द चैट फॉर उमेश. एंड गाइस 108 people of you are here. अभी तक 100 लाइक्स मेरे हिसाब से हो जाने चाहिए थे. बट डॉक, अमृत, अनूप, विनी, Aditya, everyone, man, congratulations on getting the membership. चाहे आप हो इधर या नहीं हो. But if you're watching this on a replay, man, uh, yeah, please a big W to Umesh. Hey Nathan, how are you? Nice to see you here, buddy. Nice to see you here as well. Hope everything's good on your end as well. Nathan, of course, Sportsnet Nathan को भी check out कर दीजिए. The guy hit 1K, I think, very recently, if I'm not wrong. So congratulations to Nathan as well, man. It's so nice to see so many new channels जो आ रहे हैं. मतलब Nathan, of course, is one of the longest there, but I'm just saying in general, काफ़ी सारे नए channels आ रहे हैं. Poetic Skills, Saransh, he hit 1K very recently. South Stand View, आलोक का channel बड़ा अच्छा है यार. Nice to have a Spurs representative. And if you check the comments of his videos also ना, हम जो सब मजाक करते थे Spurs fans भी होते हैं, you'll see how many Spurs fans are actually there, man, and they were crying out for representation. And great stuff by Alok as well. So South Stand View को check कर लीजिए, Poetic Skills को check कर लीजिए, Sportsnet Nathan को check कर लीजिए. And I'm sorry अगर मैं किसी और को भूल गया हूँ, but yeah, so many good channels यार. आप हर एक के channel को जा सकते हैं. Of course, you always have the big wigs, man. जिन लोगों के 50, 60, 80, 90, 100, 200 इतने सारे Ks of followers and subscribers हैं, but I think there is some really interesting work being also done on smaller channels. And I think if you want to have high engagement, I think smaller channels are the way to go. I know मेरे ऊपर आजकल वो हो जाता है कि दक्ष भाई आप कमेंट्स नहीं लेते, आप इग्नोर कर रहे हो. आई गेस जैसे चैनल्स बड़े होते हैं तो मुश्किल हो जाता है. मैं तो 100 लोगों पे स्ट्रगल कर रहा हूँ, मोहक के तो हजार की वॉचिंग आती है, वो कैसे मैनेज करते हैं मुझे तो वो समझ नहीं आ रहा. नील, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉन्ट्रीब्यूशन यार. CFC फैन बट लव योर वाइब, गेम विद story graphic. अरे थैंक यू सो मच यार. आई ट्राई टू मेक इट एज सिंपल एज पॉसिबल. फॉर मी नील, I think talking is very simple because you talk about things जो आपके दिमाग में sense बनाती है. But if you cannot convey your ideas to another person, I think that is the biggest tragedy. And I will tell you guys one thing. If you have to learn one skill in life, uh, जैसे like, कुछ universal skills होने चाहिए सबके पास. Cooking, cleaning and stuff like that. I think one skill you should always learn in your life
चाहे आप कॉर्पोरेट में काम करें, चाहे आप कॉमर्स में काम करें, चाहे आप इंजीनियर हों, चाहे आप आर्ट्स में हो या फिर आर्ट्स रिलेटेड स्ट्रीम में हो, you have to be storytellers. It is the biggest weapon you will have. It is how you will bring people to your side. Now, whether you want to work in social media, जहाँ पे बहुत important is storytelling, or you are somebody who works in corporate जो slides बना के presentations and excel sheets बना के presentations देते हैं, storytelling is very important. I think everyone should figure out story. And storytelling isn't just about fiction या non-fiction और आपको चीज़ें narrate करनी है. And storytelling is about conveying your ideas and conveying your vision. And I think if you can be storytellers, it's amazing. All good, Elvis. All good. Important G20 happened recently. It has a lot of geopolitical signals. I think G20 was a huge success for us. I think some of the things have been overplayed a lot, especially that Russia-Ukraine consensus. I am in big disagreement ki getting some sort of consensus at G20 is a huge thing for India. अपने diplomatic chops दिखा दिए. Um, the real big chop would have been if after G20 there would have been some effect on the war, because the war is going on, people are still dying. There is no consensus on how to stop the war. There is no consensus on what countries should do what and what countries should not do what. It's just one of those things जो आप किसी यूएन कमिटी ऑन एनवायरमेंट पे अगर आपका आउटकम आता है, वी स्ट्राइव टू रिड्यूस आवर ग्लोबल एमिशंस एंड टेम्परेचर्स बाय 1 or 2 degrees. ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है. एंड ऑफ कोर्स जियो पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट ओपिनियन, बट माई पर्सनल ओपिनियन इज a lot of good things have happened at G20. That Middle East corridor from India to Europe wala, I think that's huge. um, but I think apart from that, a lot of things have been exaggerated. um, Congratulations and welcome Abhinav to becoming a member. यार आपने भी Wonder Kid join किया है. That's huge. It's huge. So if you are a member, you go to the community tab. There's a members only post जिस पे एक Discord link आप join कर सकते हैं अगर आपको करना हो. आलोक भाई का channel is God मजेदार channel. I love Alok bhai. I love Alok. He has this very nice vibe about him. I want to get into cyber. Can you give me a gist of it? Yeah, I am not into the technical aspects of cyber. I'm into the security and political aspects of cyber. So I will say there is this book called Tannenbaum. If you just write cybersecurity, या फिर networks and cyber, networks and Tannenbaum, you will get that book. Read that book and see if you're really interested in it. All right. That's why, Michael, I'm sorry you're too obsessed with my socks, mate. It's my birthday today, yaar. Congratulations, Anurag. Happy birthday. 9/11 changed the world, and you being born also probably one day will change the world. So congratulations, and सब लोग please अनुराग को happy birthday wish कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है. भारत हो गया क्या नाम यार. इट्स जस्ट वन ऑफ दोज थिंग्स. ठीक है, आई थिंक इसको ना फालतू का पॉलिटिकल चीज बना दिया. इट वाज ऑलवेज इंडिया एंड भारत. नाउ भारत विल हैव अ लिटिल प्रिडोमिनेंस एंड आई थिंक दैट्स फाइन. जस्ट लाइक पहले इंडिया जितनी प्रिडोमिनेंस थी, वैसी भारत वाली प्रिडोमिनेंस हो जाएंगी. ये लाइफ में पहली बार नहीं हुआ है. हमने आई डोंट थिंक लीगली नेम चेंज किया है, जैसे बर्मा का म्यांमार हो गया था. दिस इज वन ऑफ दोज थिंग्स जो जैसे टर्की का तुर्की भी हो गया है. TURKYYE, दैट इज देयर ट्रेडिशनल नेम. तो टर्की से उन्होंने तुर्की कर दिया है. इट्स जस्ट वन ऑफ दोज थिंग्स. आई एम ऑनेस्टली नॉट फर्स्ट अबाउट इट. इट्स अ फालतू का पॉलिटिकल इशू जिन्होंने उन पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं लोग. मोहक पे गिव अप कर दिए हैं, अब चैट में ही आपस में लगे रहते हैं रेगुलर वाले. वी गेट कि बहुत हैं चैट्स लेने के और चैट्स में अच्छी कम्युनिटी बन गई है. सो टेकिंग load of Mohawk. अच्छा ठीक है. Much appreciated, Vakar from Mohawk. I feel for content creators and editors, storytelling is the key, 100%. Thanks, but I want some game with story and graphics. Oh, lol. I thought you were saying the channel is good with story game. Okay, so if you want a game with a good story and good graphics, I would say play one of these Skyrims. It has got good stories, and with mods, you can make it graphically amazing. You can also play the Witcher series, although I will say Witcher 2 से start करना, 3 से 1 से नहीं. So 2 and 3 आप खेल सकते हैं. अगर आपको एक और अच्छी स्टोरी चाहिए है, यू कैन प्ले द गॉड ऑफ वॉर. गॉड ऑफ वॉर पीसी पे भी आ गई है, आप उस पे भी खेल सकते हैं. सो या, देयर इज प्लेंटी ऑफ थिंग्स यार. हाँ, एग्जैक्टली.
Can you tell how Marshall good at his best? Oh, how good Marshall was good at his best. All right. um देखो यार, मार्शल को यूनाइटेड ने आई थिंक लिया था 58 मिलियन में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मार्शल की क्या प्राइस थी? यूरोस की बात कर रहा हूँ। मार्शल प्राइस यूनाइटेड। Okay, so 57.6 million pounds, right? Um, so it was the highest fee paid for a teenager मेरे हिसाब से। So क्या हुआ? राहुल के 50 बन गए। कंग्रेचुलेशंस टू केएल राहुल। लास्ट ऑफ अस इज ऑल्सो गुड स्टोरी। तो यार, ही वाज दिस वेरी एक्साइटिंग प्लेयर जो टेक्निकली भी स्ट्रांग था, फिजिकली स्ट्रांग था, टेक्निकल भी था एंड पेसी भी था। थिंक अबाउट लाइक अ स्ट्रॉन्गर बट स्लोअर एम्बापे। एंड यूनाइटेड ने सोचा कि यार, मतलब नहीं, 36 नहीं था, 57 पॉइंट समथिंग मिलियन था। दैट इज अभी तक लिटरली द फर्स्ट रिजल्ट मैंने चेक किया है, तो वही है। तो फॉर मी, ही वाज गुड साइनिंग मैन, इट जस्ट डिडंट वर्क आउट। उसके बाद इंजरीज हो गई, इनकंसिस्टेंसी हो गई, प्रेशर बहुत ज्यादा आ गया मैन यूनाइटेड में खेलने के लिए। हाउ गुड वाज ही? I think he was one of the best in the beginning. His hold up play was brilliant. His dribbling was brilliant. His finishing was nice. उसमें था कि can he develop his physical game and score with his head and score with his weak foot. But injuries and inconsistency ने उसको ruin कर दिया. Now उसकी potential is pretty much dead, man. Um, all right, all right. Your top three football YouTube content creators outside of India. So one is James Lawrence Alcott. I love that guy. Second is all of the Tifo crew. I love them. And then finally, it is Expressions, who is a comedy machine. Bhai. The guy is a comedy machine. Ballon d'Or जीतेगा 2050 में, yes. Red Dead Redemption 2 बहुत बढ़िया गेम है, मैंने फिनिश नहीं करी है। Did I finish it? No, I did not finish it. तो मेरे को वो खत्म करनी है। Lavia injured for 6 weeks, yeah. Can relate him with Dembele. Fair enough, yes. डेम्बेले का भी ये था, बट नाइस, फाइनली यार, काफ़ी टाइम बाद हम बिल्कुल चैट के एंड तक पहुंच गए हैं। मुझे ऊपर स्क्रॉल करना पड़ रहा है। इजंट वाट्स का क्रोएशिया द सेम थिंग एज भारत इंडिया? आई मीन, या लाइक जैसे चेक रिपब्लिक का भी चेकिया है, दैट्स इट्स ऑफिशियल नेम, चेकिया। इट्स फाइन, इट्स जस्ट, या, इट्स द सेम थिंग मैन। तो फॉर मी, it's not really a political issue, man. And you don't need to make it one. It's just one name will have more predominance over the other, but the other name is not being eliminated. And I don't think you should eliminate it also. Initially मुझे लग रहा था कि ये तो eliminate कर रहे हैं, but नहीं, eliminate नहीं कर रहे हैं। And eliminate नहीं करना चाहिए। The name with India वाला जो name है ना, उसके साथ बड़ा clout है हमारा। Imagine you have we are one of the few countries which have a large water body synonymous to our name, the Indian Ocean, the Indian subcontinent, the Indian plate when it comes to tectonic plates also. ये सारी चीज़ें ना बहुत कम कंट्रीज को मिलती हैं। You have the Balkan Sea, fair, but Balkan एक region है। You have the Arabian Sea, but it's not really the Saudi Arabian Sea, it's the Arabian Peninsula, and उसके अलावा उसके पास जो sea है। You also have the Bay of Bengal, uh, very strangely and very nicely. तो ये जो clout है ना, इंडियन ओशन, एक सॉर्ट ऑफ इम्प्लिसिट ओनरशिप, एक सॉर्ट ऑफ इम्प्लिसिट इन्फ्लुएंस आ जाती है इन चीज़ों में। So I don't think we should definitely eliminate India as a name, yaar. It has a lot of benefits. And apart from geography as well, yaar. Indian food is a lot of things. I mean, when you say India, na, it evokes a certain thing in foreigners, which is very important for influence. Bharat evokes a different emotion within India. So uske bhi of course फायदे तो हैं. So um, I just think abandon नहीं करना चाहिए, preponderance जिसको भी देनी है, you prefer भारत, you prefer भारत, you prefer India, you prefer India. I don't think एक नाम या दूसरे नाम को preference देने से आप better या worse होते हैं. Just one of your, it's an preference thing. जैसे आप इट्स अ बैड एग्जाम्पल, बट अगर आप गोलगप्पे को गोलगप्पे बुलाओगे या पानी पूरी बुलाओगे या पुचका या जो भी फुचका पता नहीं क्या होता है, कॉल इट वट एवर मैन, इट इज वॉट इट इज। James Lawrence Alcott is great. I watch him regularly. Ben Foster and Pitchside is also great. I just started watching Pitchside, you know.
They're not bad. They're not bad. Do you watch Football Daily? I love watching them too. No, I don't watch Football Daily, but I will check them out. Thank you, Yashpal. Hey, Santosh, how are you? Nice to see you here. Yaar. I'm doing good. Ha, Fuchka. Thank you, Swandeep. Uh, I'm good, yes. Santosh, how are you? आप बताइए आप कैसे हैं? Unpopularly, I am Spain and Germany fan. देखो man, for me, I personally don't get दो teams का fan होना. Um, but I don't think it's a bad thing either. Of course, if your permutation is आप United and City fan है, then हाँ मेरे को थोड़ा अजीब लगेगा. But if you're a United fan and you're a Madrid fan, fair enough. If you're a United and Milan fan, fair enough. As long as I think your teams are not clashing regularly twice a year or four times a year or whatever it is, मुझे लगता है it's fine. It's all okay to be as fans of as many teams as possible. Yeah. Name change is not a problem, but Indian passport is still weak. I have applied for Europe visa. It's so difficult. That is true, yeah, Puneet. Passport weak है, but that's more of a cultural issue, man. कि हम लोग ना जाके वापस नहीं आते. अगर हम जाके वापस चले जाएं, then the passport becomes strong automatically. Because and why do we leave and not come back? Well, there are the social and economic factors why we move to other countries. But I think it will change in the future. I think naturally India का passport stronger बनेगा because if there's one thing I've realized now, Europe has a great head start over India when it comes to cleanliness and pollution and law and order and lot more things. But I think we are catching up with them at an incredible pace. मतलब टू बी ऑनेस्ट मेरे हिसाब से यूरोप इज स्लीपिंग द वेस्ट इज स्लीपिंग ऑन अस उनको नहीं पता है कि हमारा क्या प्रोग्रेस है एंड ये मेरे को एविडेंस उसी बात से हो गया जब लोग सरप्राइज थे दैट वी हैव अ वेरी वेल फंक्शनिंग स्पेस प्रोग्राम बिकॉज लोगों के दिमाग में जो अभी भी इंडिया की इमेजरी है वो इज सॉर्ट ऑफ अ गरीब सॉर्ट ऑफ ऐसी है एक सॉर्ट ऑफ सेमी implied racist it's not like an active act of racism or anything but they have a very weird stereotypical view of India and whatever man fair enough um, but yeah they are all sleeping on us and I don't know if the world leaders are also sleeping on us or not but we have tremendous influence. I know we'll catch up with them as soon as possible. We will eventually sooner than you think isi lifetime mein, within the next few decades we will be in a situation where moving abroad will not be attractive. Staying in India will be more attractive and I can definitely see that happening. अभी तक लोग वापस जाते हैं mostly for familial and emotional reasons and patriotic reasons. Eventually it will make more economic sense to be in India. I can promise you that. Germany heartbroken 18 and 22. Spain सिर्फ पास खेलता है and Luis Enrique fan I heard he leaves Spain coach. यार देखो यार स्पेन भी मूव ऑन कर लेगा. मेरे को तो स्पेन का तो रूबियालेस वाला सबसे बेकार लगा है बट यार ठीक है नो प्रॉब्लम यार. केएल राहुल को क्या हो गया है क्या मार रहा है हम फिर से बैटिंग कर रहे हैं बढ़िया है 3 बार हमने बैटिंग कर दी. हेलो ZRA नाइस टू सी यू हियर एज वेल. I think the intention is to change India. That is Bharat. The Bharat is India. And it's the least worryful thing when the government changes. They can anytime revoke it. It's just a pointless exercise where I don't care. My favorite YouTuber outside India is you. Thank you so much, hero. Gaurav, Chelsea fan. Yeah, काफी अच्छा लगता है जब अच्छे Chelsea fans भी आते हैं यहाँ पे. I support Spain and Argentina because of Messi. All right. Why Spain because of Messi? Because he played in Spain. All right, all right. If you're if you're a बहन बासा fan, देखो कुछ reconciliations तो difficult होती हैं. जैसे I have a Arsenal and Madrid के लिए soft spot है, but ऐसा कुछ मेजर हुआ नहीं है. हमने उनको एक बार हराया था चैंपियंस लीग में जब ऑनरी भी था, बट उसके अलावा कभी भी नहीं हुआ. I'm a Chelsea and Arsenal fan. Damn, sir. Damn. 4 likes for 100. Come on, guys. Come on. 4 likes so you guys can do it. There's a dearth of right wings compared to left wings. Who, according to you, is the best upcoming right winger? Not talking about established like Saka and Gnabry. Who is the best right winger? I mean, to be honest, इतनी scouting करी नहीं है यार टिकी टाकर. But the day I know, I will let you know. I promise. मेरे को ऐसी चीजें नाम नहीं फड़कने without knowing कि मैं किसको क्या करूं. I'm pretty sure though Brazil and Argentina. I think South America में काफी अच्छा talent होगा for sure. Uh, I find two games named Quarry and Devil in me, but I don't know to buy or not. Well, you can always, if you're buying on Steam, यार, आप Steam में try करके उनको refund करा सकते हो if you don't really like them. So there is, I think, 24 hours होता है. If you play 24 hours or 1 hour and then you don't like it, you can refund it. So yeah, keep a track of your time and then refund it if you want.
Do you see Klopp managing both club and country? I don't think Liverpool would like that too much. They anyways don't have a proper DOF. Now coach will also be distracted. I don't know, man. अच्छे चेल्सी फैंस, ट्रस्ट मी मैन, ऑन माई ट्विटर मैंने इतने सारे चेल्सी फैंस को ब्लॉक किया हुआ है, बिकॉज लाइक मुझ जैसे जैसे होता है, ठीक है, मैंने मेरी मेरी ऑब्जर्वेशन, एंड अगेन इट्स नॉट हेट, ऑफ कोर्स इट्स नॉट हेट, बट इट्स माय ऑब्जर्वेशन. You cannot talk to a Real Madrid fan for more than 10 minutes before they say 14 UCLs. ये तो उनका होता ही है, ठीक है. एंड सेम विद चेल्सी फैंस, अगर आप चेल्सी फैन से ट्विटर पे बात करोगे, इवेंचुअली विद इन नेक्स्ट 5 रिप्लाईज आपको एक यूसीएल की ट्रॉफी वाली पिक्चर दिख जाएगी उनकी, ठीक है. सो फॉर मी, every fan base has one of those things. Every fan base has one of those things. आर्सेनल आर्सेनल फैंस ज़्यादा जल्दी ओवर हाइप हो जाते हैं. यूनाइटेड फैंस हिस्ट्री मर्चेंट्स बन जाते हैं. लिवरपूल फैंस सोचते हैं दुनिया हम के अलावा घूमती है. चेल्सी फैंस को एक वो यूसीएल की फ़ोटो दिखानी होती है हर 5-6 रिप्लाई में. यूनाइटेड रियल मैड्रिड फैंस 14 यूसीएल करते रहते हैं. मतलब एनी आर्ग्यूमेंट, हमारे डिस्कॉर्ड में एक रनिंग जोक है दैट शांतनु हु इज अ रियल मैड्रिड फैन, ही जस्ट वांट्स टू से 14 यूसीएल्स एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ही जस्ट वांट्स टू से 14 यूसीएल्स, ठीक है. बार्सिलोना के 2 फेवरेट लेटर्स है पीएनजी, ठीक है. एंड बस कुछ भी हो जाए, पेड्री गावी पेड्री गावी पेड्री गावी, और अब नया हो गया ऑफ कोर्स लमीन यमाल. तो तो यही है. स्पर्स फैन बेस्ट. स्पर्स फैंस का मैंने टू बी ऑनेस्ट यार, देखो स्पर्स फैंस के लिए जब भी मैंने बात करी है, इट्स जस्ट फ्रॉम मी, आई एम टेरेबल टू स्पर्स फैंस. मैं जब भी उनसे ट्विटर पे बात करता हूँ, मैं वो किएलिनी वाली बस पिक्चर लगा देता हूँ उसके आगे. सिटी फैंस भी यूसीएल देखा भाई. सिटी फैंस था, मैं बोलना नहीं चाहता यार. सिटी फैंस अलग ही, डिफरेंट ब्रीड, आई विल से डिफरेंट ब्रीड. एवरी फैन विल रिप्लाई यूसीएल टू आर्सेनल. मैं वही तो कह रहा हूँ ना, मतलब मैं किसी भी चीज के बारे में बात कर रहा हूँ, आई एम एन आर्सेनल फैन फर्स्ट, ठीक है. उस दिन एक बात थी कि आ, मैंने बोला था कि ये कुछ कुछ रैंडम चीज पे बात हो रही थी, और एक चेल्सी फैन ने उसके नीचे रिप्लाई कर दिया, स्टिल मोर यूसीएल्स देन आर्सेनल. अरे क्या है, मतलब मैं हगने भी जा रहा हूँ, मैं बोल दूं कि यार आज आज मैंने पता नहीं कुछ गलत खा लिया है, मेरे पेट में प्रॉब्लम हो रही है, और कोई ना कोई चेल्सी फैन आके बोला यूसीएल यूसीएल. अरे भाई रिलैक्स मैन. आई एम अ रियल मैड्रिड फैन बट आई डू नॉट लाइक यूनाइटेड अ लॉट, बट आई लाइक लिवरपूल सिंस लिवरपूल को पेलने में मजा आता है. नाइस सक्षम, नाइस. यू कैन टॉक टू मी फॉर डेज, आई नेवर ब्रिंग दैट अप. आई नो आई नो आई नो. That's why you're one of the great ones, man. I won't say you're a good fan, you're a great fan. बाल्डे फैन बॉयज भी, अरे हाँ. Jersey looking cool, thank you so much, hero. Bhai, wanted to exercise daily this year, but has always failed. Now 3 months left. How should I approach it? And any advice? The best time to exercise was yesterday. The second best time is today. You don't have to have this sort of Arnold Schwarzenegger वाला वर्कआउट जहाँ पे आप मतलब रिप हो रहे हैं. जस्ट वर्क. बताओ सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस सागर कब होती है? वो कमरे से निकलने वाली रेजिस्टेंस होती है, ठीक है. whether you're going for a run, whether you're going for a cycling, or whether you're going to the gym, सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस इज नॉट द 70 kilos you're going to lift in the gym. सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस इज stepping out of your room, stepping out of your house. तो मैं कहता हूँ तुम घर से निकलो, दैट इज योर फर्स्ट वर्कआउट. जस्ट गेट आउट ऑफ द हाउस. एंड आई एम नॉट सेइंग स्टे एट द जिम फॉर 2 hours यार सागर. मैं कहता हूँ तू 20 मिनट रुक के आ जा. बट ठीक पता है क्या होता है, दिस इज हाउ आई टेल माई सेल्फ. आई वाज लाइक मैं 15 मिनट, मेरा आज जिम जाने का मन नहीं कर रहा है, मैं 15 मिनट जिम जाऊंगा. आई विल डू 1 set of every exercise अगर मेरा 15 मिनट वाला ही मन हुआ. एंड देन आई कम बैक. एंड देयर आर डेज जब मैं सिर्फ 20 मिनट जिम जाता हूँ, मैं लगा आज नहीं हो रहा, आज तो बिल्कुल भी मूड नहीं है. आई गॉट आउट, आई गॉट अ नाइस कार्डियो सेशन इन एंड आई एम बैक, ठीक है. और फिर मोस्ट, लेकिन ये तो कभी कभी होता है. सबसे ज्यादा क्या होता है, मैं जब रूम से निकलता हूँ, मैं जिम पहुंचता हूँ ना, बोलता अब आ ही गए हैं तो कर ही लेते हैं, एंड ऐसे ही वर्कआउट हो जाता है. तो द बिगेस्ट रेजिस्टेंस इज गेटिंग आउट ऑफ योर हाउस मैन, एंड योर बॉडी विल फाइंड एवरी एक्सक्यूज पॉसिबल. बारिश हो रही है, चाबी भूल गया हूँ, ये अरे इतने बजे ये है, अरे बाइसिकल में हवा कम है तो जा नहीं सकते. हर पॉसिबल रीजन बनाएगा ब्रेन तेरे को नहीं पहुंचने के लिए. Just get to the gym and be there for 15 minutes.
The second you're there, you'll be like, अब आ ही गया हूँ, अब कर ही लेता हूँ. That's it. All right. बाल्डे, यस बाल्डे भी है. तो बाल्डे, पेड्री, गावी, लमाल एंड ऑफ कोर्स चलो एटलीस्ट फ्रेंकी पे ऑडियंस थोड़ी सी बटी हुई है बट स्टिल आर्सेनल वाले इनविंसिबल बोलते रहते हैं. हाँ एग्जैक्टली, आर्सेनल वाले इनविंसिबल बोलते रहते हैं. हम अपनी गोल्डन ट्रॉफी की फोटो दिखाते हैं. तो ये हर एक फैन बेस में होता है यार कुछ ना कुछ. रियल फैंस आर इनसिक्योर, दे से 14 यूसीएल्स एज इफ दे आर अलाइव फॉर दोस. 14 यूसीएल फ्लेक्स करने का मजा ही अलग है. मैं वही कह रहा हूँ ना, देखो ये लिटरली एक के बाद एक कमेंट्स है. Ideal Salah replacement. I don't think you will have a Salah replacement. That is like saying, what is the ideal Neymar replacement? You don't have a Neymar replacement. Neither do you have a Messi replacement or a Ronaldo replacement or an Mbappe replacement or a Haaland replacement. You can just hope that the new guy can replicate some percentage of it. ठीक है? That's it. Um, मैं तो अपने रूम में ही वर्कआउट करता है, मुझसे नहीं होता अपने कमरे में वर्कआउट. आई फील द बिगेस्ट रेजिस्टेंस कमिंग आउट ऑफ द क्लोजेट देन कमिंग आउट ऑफ द हाउस. दैट इज ऑल्सो ट्रू. बट वी आर टॉकिंग अबाउट वर्किंग आउट, नॉट that kind of a workout. Someone make fun of it, but sometimes I fail to watch Spain, Germany, Chelsea game, but mainly I follow Indian football. And I said, "What's? Don't let other people's comments here tell you about what to do." Um, मैं तो कभी कभी 3-4 दिन रूम में ही रूम में रहता हूँ. होता है यार यशपाल. आई हैव हैड दोज डेज व्हेन आई जस्ट डोंट एग्जिट द रूम. एंड द ओनली टाइम आई यूज्ड टू एग्जिट वाज टू गेट द फूड जो मैंने ऑर्डर किया है. I never even argue with Real fans. Spam 4-0 every time because I'm a City fan. Do you know about David Goggins? Of course, yeah. Who doesn't? Bhai, what if you work out at home and have equipment? हाँ मतलब देखो, यू कैन वर्क आउट एट होम एंड यू हैव इक्विपमेंट एंड उसके बाद भी आपका मन नहीं कर रहा है तो देन इट्स मोस्टली ए विल इशू. एंड मैं वही कह रहा हूँ. आई थिंक दिस कैन ऑल्सो बी रिजॉल्व. जस्ट your workout does not need to be 2 hours. I mean, if it's 2 hours, it's fantastic. But even if it's half an hour or 20 minutes, it's okay. At least it's something in your body. And मैं honestly बता रहा हूँ, कभी कभी ना वो 2 सेट आप मार देते हो ना, वही डिफरेंस हो जाता है. वही डिफरेंस हो जाता है. सो इफ यू हैव एन ऐप और इफ यू हैव अ नोट्स ऐप जहाँ पे आप अपने वर्कआउट ट्रैक करते हैं ना, क्रिएट अ वर्कआउट फॉर लेजी डेज विच इज जस्ट अ फुल बॉडी वर्कआउट बट एक एक सेट या दो दो सेट. दैट्स इट. एंड आई प्रॉमिस यू वो 20 मिनट्स में हो जाएगा अगर आप लो वेट से भी करना चाहते हैं. ठीक है. और कुछ नहीं तो कार्डियो चले जाओ. और कुछ नहीं करना है. पुट ऑन योर फेवरेट फुटबॉल पॉडकास्ट या फिर हम में से किसी भी यूट्यूबर का कोई पॉडकास्ट लगा लो, कान में ले लो एंड बस निकल पड़ो. जस्ट गो आउट फॉर अ वॉक. आई नो इंडिया में वॉकिंग उतनी नहीं है फीजिबल. धूल मिट्टी ट्रैफिक धूप सब है. बट आई डोंट नो, गेट ऑन अ ट्रेडमिल मे बी. Because sitting on a screen, eating your chips, and just watching us like this is not. I mean, I appreciate it, and you should do it as much as you want. But I think you listen to us because हम में से कोई इतना attractive तो है नहीं. And ना हम आपको physically and visually कुछ दिखाते हैं unless हम कोई game वगैरह खेल रहे हैं. So utilize it. अगर मैं आप लोगों से भी ऐसे बात कर रहा हूँ, I promise you, if somebody is thinking कि आज मैंने workout नहीं किया, you can start this stream from the beginning, put your earphones on, go out for a walk, or just do 2 sets. And that's fine. That's it. By the time you reach this point, I promise you, you could have done like 4 different exercises by now with 2 to 3 sets each. Is it just me? घर से जिम जाने का मन नहीं करता, फिर जिम से घर आने का. Exactly the point. Exactly the point. Sometimes I don't feel like going to the gym because I am like, पहले मैं निकलूंगा, साइकिल निकालनी है, उस पर बैटरी चिपकानी है, होप करना है मौसम ठीक हो, इतना भारी बैग लेना है, जिम जाना है, 20 मिनट साइकिल करके फिर चेंज करना है, फिर जिम करना है, फिर वापस ये सब वापस आके करना है. सो फॉर मी गोइंग टू द जिम इज लाइक अ 3-4 आवर थिंग. क्योंकि मैं जिम में 1-1.5 घंटा लगा लेता हूँ, देन आई चिल एट द यूनिवर्सिटी फॉर अ बिट एंड फिर मैं वापस आता हूँ. सो आई विल से कि रीजंस मेरे पास भी बहुत होते हैं बट समटाइम्स गेटिंग देयर इज फाइन. एंड देन उसके बाद मेरा होता है कि अब आ ही गया हूँ तो 1-2 घंटे निकाल ही लो. सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस वही होती है. मोस्ट सेंसिबल फैन बेस प्रेजेंटली न्यू कासल. इंडियन फैंस यस. English fans no, not really. I will not say this one is overrated and that one is overrated. I like all of them. 14 UCL is literally what my Madrid fan replies every time I ban. Exactly my point, random lad. Exactly. Um,
Invincible is a big flex, to be honest. मेरी club करती तो I won't shut up about it. My biggest nightmare was Bhasa nearly achieving it under Ernesto, I guess. Are all are introverts in the chat. हाँ वो तो है ही. I think जो लोग socially mingle नहीं करते वो YouTube chat में बड़े डॉन वॉन बनते हैं. And I think that's fine. That's okay. You need an outlet. Everyone needs one. वर्कआउट का तो ठीक है लेकिन मेकआउट के लिए क्या करूं? बस यू वही तो यार गोल्डन क्वेश्चन है फॉर all of the things, man. The day you make yourself very desirable in your own eyes, the day you are super proud of yourself ना, मैं चुम्मियों की लाइन लग जाएगी आपके सामने, मजाक भी नहीं कर रहा मैं. यू स्टार्ट स्किन केयर रूटीन, इज इट इफेक्टिव? हम तो सिर्फ फेस वॉश को ही रूटीन कर. द मोस्ट बेसिक स्किन केयर रूटीन इज फेस वॉश, मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन. थ्री थिंग्स दैट यू नीड, दैट्स इट. SPF 50 वाली सनस्क्रीन ले लो, एक अच्छा फेस मॉइस्चराइजर लो, बिकॉज स्किन मॉइस्चराइजर एंड फेस मॉइस्चराइजर आर डिफरेंट. एक फेस मॉइस्चराइजर लो, एक सनस्क्रीन लो, एंड उस सबसे पहले फेस वॉश करो. जब भी बाहर से घर आओ फेस वॉश कर लो, दैट्स इट. फिर से आ गई बारिश, क्या ही कर सकते हैं. मैं थोड़ा सा खुश हूँ बिकॉज एटलीस्ट वॉचिंग थोड़ी बढ़ जाएगी वापस. I just want to say sometimes 6-5 scoreline hurts more than a 4-0. Do you have plans to do YouTube? No, not really. Not yet, at least. Not yet. Right now, definitely not. Right now, I am, at least for the next 3 years, I plan to study for sure. And this right now is an escape. The day I feel I have a lot to offer to people and I can offer content in a way that I really, really want to, because right now I can't. Uh, that day I will make it full time. Workout is not a problem, but changing diet and reducing. Yeah, ये बताओ पुनीत, the day you realize that you are not the only one struggling, we should start being a little kind to ourselves. Like, think struggling with diet is something that I am also very familiar with. मैं खुशी खुशी एंड जोश में तो आई बाय ऑल दीज ब्रोकलिनीज एंड आइसबर्ग लेटस एंड एवरीथिंग कि अब तो मैं सैलेड ही खाऊंगा, सैलेड ही खाऊंगा. इट्स फाइन as long as you realize it's a problem and you reduce the frequency. मतलब वर्कआउट करो, एंड आई थिंक इट्स जस्ट अबाउट थोड़ा सा ना मेंटली कस के बस बोलना है कि एक हफ्ते करके दिखा कि तेरे पास डाइटरी इश्यूज दिए. मतलब यू आर नॉट फकिंग स्लेव टू योर मेंटल विम्स. जब मेरे को डेजर्ट खाना है, मुझे ये खाना है, वो खाना है, द डे यू आर नॉट अ स्लेव एंड द डे यू रियलाइज इट, सब ठीक हो जाएगा. बट यार डाइट इज अ ह्यूज इशू. अभी तक मैंने खुद सॉर्ट नहीं किया, सो आई कांट गिव यू बेटर एडवाइस ऑन दिस. द डे आई फिगर आउट माई डाइट, द डे आई कॉन्कर माई डाइट, आई विल बी unstoppable. The day I conquer my diet, I've conquered alcohol, I've to an extent conquered video games, uh, and I have figured out to work out effectively and regularly without feeling guilty about not working out. I think जिस दिन मैंने डाइट कंट्रोल कर लिया उस दिन मैं अनस्टॉपेबल हो जाऊंगा. 14 isn't a flex, so sounds more of an excuse when you can't affect defeat. हाँ, why flex something you didn't even witness? I don't think it's about witnessing or anything यार. जैसे अगर आप मान ले फॉर एग्जाम्पल अगर आप यूनाइटेड फैन है, यू ऑल्सो से इतने टाइटल्स, नंबर 21 आएगा, नंबर 21 आएगा, बट आपने देखी कितने हैं? 10 मैक्स, 11. बट it is one of this, it is an achievement for your club, man. When you support a club, it is a family. I think you can flex and you should flex, that's okay. But using it as a defense mechanism to ward off criticism, then I think it's wrong, then I think it's bad. I banter my friend who's a City fan by saying Madrid has more UCLs and they have UCL appearances. Lol. मैं तो वर्कआउट नहीं करता, मन ही नहीं होता. ठीक है गौरव, इवेंचुअली मेरे हिसाब से बताओ क्या होता है गौरव. Everyone has a strong desire to look amazing. Now, if you naturally look amazing and you're naturally built well, then fair enough. Most of us aren't, and we have this desire to look amazing and have not even aesthetically look good, but be strong, man. And I don't know ये drive कहाँ से आती. Maybe it's biological, maybe it's psychological and internally आती है. But I have never met anybody who does not want to get strong. कुछ लोग वर्कआउट करते हैं हेल्थ रीजंस की वजह से, कुछ लोग वर्कआउट करते हैं एस्थेटिक रीजंस की वजह से, कुछ लोग वर्कआउट करते हैं स्ट्रेंथ की वजह से. आपको भी एक दिन रीजन मिल जाएगा. आई रियली हैव पोटैटो चिप्स इन माय हैंड्स राइट नाउ. Do squats listening to Daksha's voice worth it? Yes, let's go. Drop that ass, boys.
Do you take protein? Yeah, I take whey protein, cookies and cream. Although I want to move to the regular one. So I take whey and I take creatine. ये दोनों लेता हूँ मैं. I am writing my record and listening to you. बस बढ़िया. Just do stuff while you listen to me. It'll be very nice. What do I study? Yash, I study cybersecurity with warfare. It's a political science international relations course, and that's all it is. I was trying to include a lot of cyber aspects to it, but it'll become a very complicated research, जितना especially जिस direction में मैं जा रहा हूँ. Drinks break है, बारिश नहीं है. Damn it. A club with less or to no achievements will always seem humble. Liverpool fans looked nice until they won the UCL. No modern online fan base know how to handle club success. Fair enough. That's a good point. Is 20 a good age to start gym? You can start gym at 16. This thing, you should not start when you're like 10, 11, 12, but 16 pe you can start. Eat in moderation. Fair enough. Um, Arsenal versus Tottenham के गेम तक आपका 10K हो जाएगा शायद. Let's hope so, man. Let's hope so. Um, I am a little obsessed with that 10K number. I want it achieved before October 1st. I think watch along के दिन हो सकता है, watch along के just बाद हो जाएगा. क्योंकि अगर हम हार गए तो बहुत फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे. अगर हम जीत गए तो थोड़े से बढ़ेंगे, बट बढ़ेंगे. So maybe after that game बढ़ सकते हैं. But yeah, we are at 9,400 something if I remember. 9461 था जब मैंने स्टार्ट किया था. एक्सपेक्ट 2-3 तो और बढ़ ही गए होंगे, क्योंकि यूजली जब चिल स्ट्रीम्स होती है ना तब कम ही बढ़ते हैं. 9472 हो गए, राइट. सो 9.47 पे आ गए. एंड अरे 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 अरे, किसने मेंबरशिप गिफ्ट करी है? और मेंबरशिप गिफ्ट हुई है क्या? उमेश ने फिर से गिफ्ट करी है. उमेश, थैंक यू फॉर गिफ्टिंग 5 मेंबरशिप्स अगेन यार. मच लव टू यू माय ब्रो. उमेश ने 10 मेंबरशिप्स गिफ्ट कर दिए हैं. लेट मी चेक. इसमें तो दिख नहीं रहा यार, बट उमेश, थैंक यू सो मच फॉर गिफ्टिंग 5 मोर मेंबरशिप्स यार. कीप द चैनल ग्रोइंग. You keep me motivated to keep coming again and again. Thank you so much, Umesh. Yaar. 10 more members have joined the family. Yes, W. I don't know how to pronounce it, but yes, exactly my point. Virat ka bhi 50 ho gaya. Congratulations. Can you tell us about your background? Are you coming from a rich and affluent background? Yeah, I am. I am in this unique position where my parents were not rich. They were definitely weren't poor for sure. They were not rich, but they worked their asses off, and I've seen them get rich in front of my eyes. So I have this very unique mix of upbringing where the roots of my thoughts are very poor in nature. um जो नहीं होता कंजूस टाइप्स. I'm not कंजूस per se, but saving oriented and not splashing oriented. But also in my later teens plus early adulthood, my parents did really well for themselves. So now I also have that affluent side of it. So I am in this very nice situation that I wasn't born to rich, successful parents, but mere parents were smart, intelligent. They themselves came from a very mixed background of parents who were born poor but eventually became rich, but did not pass anything on to their kids. My dad, I think my dad had, mere papa jo the, he had a lot of tragedy in his life, early in his life. So he was definitely not somebody who grew up rich. मेरी mom still grew up a little richer than my dad. But उसके बाद nice to see both of my parents did so well for themselves यार. तो यही है. Okay. Umesh Bhai OP for sure. Umesh Bhai OP for sure. Mohak was in his peak during 21-22. He was a treat to watch, with the rants were awesome. I think it's a funny thing. It's also a sad thing because I think, मैं अभी तो मैं सिर्फ मोहक का एग्जांपल ले रहा हूँ. आई थिंक मोहक का जो कंटेंट है, उसकी जो वैल्यू है, इज सो मच मोर देन हिज रैंट्स. द प्रॉब्लम इज the most viewing he gets and the most views he gets are in the videos where he's having a meltdown. It's kind of a very sad situation अगर हम इसको थोड़ा सा ना पीछे हटके सुने कि लाइक मेरे को एक याद है, मेरे एक ना हम आर्सेनल हार गई थी टुवर्ड्स द एंड ऑफ लास्ट सीजन. एक गेम हार गए थे हम किसी के अगेंस्ट. तो उसमें था कि दक्ष भाई आप रैंट क्यों नहीं करते, थोड़ा अच्छा और लगता. ठीक है.
And I was like, bro, matlab, and I genuinely for that time I felt like a monkey. I was like, मुझे इन लोगों के सामने ना नाचना पड़ेगा, because that is the only thing they will appreciate. And I'm not saying सब लोग करते हैं, um, बट मेरे को ये बात फनी भी लगती है बट अच्छी नहीं भी लगती कि जब बाबा का मेल्टडाउन हो रहा है, निधि भाई का मेल्टडाउन हो रहा है, मु- मुक्तेश चिल्ला रहा है या कुछ हो रहा है, बारसा हार गई या रियाल हार गई, या फिर मोहक चिल्ला रहा है, रैंट कर रहा है, उसको गाली वाली पड़े, दैट इज द टाइम व्हेन दीज गाइज get the most views and everything. Against Brighton at the Emirates, मुझे याद नहीं what it was. Those are views from haters, and that's the problem, right? That we are only in your memories when we lose, because people want to see अब ये क्या करेगा बंदर, अब ये कैसे नाचेगा. Yeah, that is why I'm saying it's not a Mohawk only problem, it's a general YouTube problem. And एक sort of लोगों को एक hidden pleasure मिलता है to see other people suffer, and I just don't know why. एंड दिस इज, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं इन सब चीज़ों से ऊपर हूँ. जब यूनाइटेड हारती मैं भी गोल्ड ब्रिज देखता हूँ, जब आर्सेनल हारती आप लोग भी एएफ टीवी देखते हैं. इट्स अ वेरी फनी थिंग, बट जस्ट बीइंग इन दिस शू वेर आई एम अ कंटेंट क्रिएटर एंड लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि चल भाई चिल्ला, चल भाई कपड़े फाड़ गुस्से में. आई जेन्युइनली फील लाइक अ पपेट कि मुझे लोगों के सामने मुजरा करना पड़ रहा है टू गेन देयर एक्सेप्टेंस एंड लव एंड लाफ्टर एंड एवरीथिंग. क्योंकि अगर मैं नहीं करूँगा तो मैं भूल, लाइक पीपल विल फॉरगेट मी. इट्स काइंड ऑफ अ वियर्ड थिंग कि मैं क्या ही करूँ. बड़ी अजीब सी बात है, मैंने इस पे ज़्यादा सोच विचार नहीं किया, बट दिस इज समथिंग दैट आई थॉट. हाँ देख हार्दिक, इट्स नॉट इवन अबाउट, हाँ शार्डन फ्राइड तो है, बट शार्डन फ्राइड बताओ क्या होता है. आई मीन आई नो व्हाट शार्डन फ्राइड मीन्स. या इट इज शार्डन फ्राइड एक्चुअली, बट it's a very weird thing, man. Schadenfreude in silence is still fine. Actively encouraging people to lose their minds is very weird. Actively encouraging people, अब और चिल्ला, अब और कर, cry more, bro we want to see your tears. ये मेरे को अजीब लगता है. ये शेडन फ्रॉइड नहीं हुआ, फिर ये सेडिज्म चले जाता है मेरे हिसाब से. एंड ये देखो नहीं, एंग्री आयरन मैन की बात नहीं, जब बाबा दुखी होते हैं तब लोग उन पे जाते हैं. जब अंकित भाई लूजेस इट व्हेन चेल्सी आर लूजिंग, तब उन पे ज़्यादा लोग चले जाते हैं, ट्रोलर्स हो जाते हैं. एंड वही बात होती है. मतलब आई डोंट वांट टू गेट इट इनटू अ टेरिटरी, ठीक है. फॉर एग्जांपल जब मैं आर्सेनल यूनाइटेड को हराया, आई कुड नॉट कंटेन माय एक्साइटमेंट. I was happy, I was celebrating. So did Mohawk when Garnacho scored. People started trolling him for his celebration. Um, very strange, very weird. And then if I feel कि अगर मान लो, let's say Arsenal make it through the UCL groups, then we get knocked and we get matched up against Barcelona or something. हम में से कोई second आता है and whatever, we get matched together in the round of 16. I would be like, मान लो आर्सेनल एक गेम जीत भी जाता है, फर्स्ट लेग हम जीत भी जाते हैं, मैं कहता हूँ यस आर्सेनल गुड, आर्सेनल दिस, हमने बार्सिलोना को मजा चखा दिया एंड एवरीथिंग. एंड देन लेट नेक्स्ट टाइम आर्सेनल लूजेस, वेदर इट्स अगेंस्ट बारसा और अदर टीम्स. एंड बारसा, मैं ये नहीं सिर्फ बारसा के लिए नहीं कह रहा हूँ, कुड बी रियल मैड्रिड, कुड बी बायर्न म्यूनिख, कुड बी एनी टीम. बट आई डोंट वांट इट टू बी लाइक, अरे यार मतलब मैं खुल के भी सेलिब्रेट नहीं कर सकता बिकॉज लोग अब मेरे को नाचने और दुखी देखने आ गए. इट्स वेरी वियर्ड मैन, इट्स जस्ट समथिंग आई डोंट रियली लाइक. वकार कहते हैं your thoughts on building of gym culture instead of outdoor. It means more sense working class, but being an athlete, I would say outdoor are much better than gym. If you have the public infrastructure for outdoor exercises, why not? Yeah. In Ireland, the issue is the weather is an issue. In India, the issue is again the weather is an issue and the infrastructure is an issue. देखो यार, wherever you can work, you should work. Gym, outside, in your home, in your bed, wherever. Just get the calories in, man. I have genuinely no issues with all of these things. It's very sad to see Arsenal not winning UCL while all its competitors like United, Liverpool, Chelsea already won it. Whenever we talk about EPL, there used to be only 4 teams. Yeah, man, and that's something very sad that we've never able to be managed to win the UCL. But theek hai, it's no drought lasts forever. And this will either one day we will win. I hope it's in my lifetime though. No, like content views wise, he deserves those views regularly. His growth was awesome. I want to see his growth like that regular. No, I get it. I get what you mean. बस मैं एक tangent पे चला गया था. Big Boss भी ऐसे ही चलता. I agree. It is a little sadistic. It's also a little dystopian in my mind.
Can't reveal all my personal details. My parents earn much more than the average Indian, but my father is such an obstacle in my life that I've lived an average lifestyle all your life. Yeah, Shivam, these things you'll understand later in life. And these things will shape your upbringing. And to be honest, there are also times when I have not agreed with some of the decisions that मेरे parents ने लिए थे. But what's the best way to go about it? When you grow up yourself, when you earn for yourself, make those decisions and then you see. Sometimes I've been vindicated in my thinking कि हाँ मैं सही था, मेरे parents शायद से misguided थे. And sometimes I'm like अरे वाह अच्छा, this is why my parents told me not to do this or this to do this with money. So yeah, धीरे धीरे आपको सब समझ आ जाएगा. Cringe हो जाता है rant, I get it. It's the exact thing which happens with expressions while Spurs are losing. His watching is absolutely peak. देखो, if बताऊँ क्या है, बाहर का I would say people outside have thicker skin, much thicker skin, and they can make this entirely about. Um, I think it's मेरे हिसाब से क्या होता है, for them they can separate the jokes and the galis and everything with the money. They are earning money. For them it's a pure business. And you will see with this expressions, Lee Gunner, AFTV, a lot of times these guys don't mind being memes and everything just because they also earn money. I think fair enough on them यार. Everywhere जहाँ मसाला मिलता है वो जानता है वहाँ व्यूज पहुंच जाती है. अरे मोहक भी है यहाँ पे. Now I don't think it's the reality. The core audience will always be there and that core audience will keep you growing if you're real in front of them. नहीं नहीं, ये 100% agreed है. मेरे को बस ये लगता है कि यार अगर if you are there, if 5k people can tune into your channel but they're only tuning into your channel just to see you cry, I think that's fucked man. मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है. अगर आपको 5 के अगर आप लोग आते हो सिर्फ किसी का दुख देखने ना, मेरे हिसाब से तो मेंटली खराब है. कोर ऑडियंस तो यार देख अपनी रहती है. ये 100 लोग जो अभी आए हैं, अगर आर्सेनल अभी हारी होती है, मैं वॉच अलोंग होता है, ये 100 ऑडियंस की 800 ऑडियंस बन जाती. बट दीज 100 पीपल आर द मेन ड्राइवर्स ऑफ माई ग्रोथ एंड इनको तो मैं हमेशा अप्रिशिएट ही करूंगा. बट मेरे को वही लगता है कि जो अलग से जो 700 लोग सिर्फ दुख देखने आए हैं ना, मुझे अच्छा नहीं लगता. सबसे ज़्यादा ट्विटर पे हॉन्ट यूरोपा लीग का एडमिन करता है. लिवरपूल वाला मैंने देखा है. दे ट्रोल्ड यू इवन व्हेन आर्सेनल बॉटल द लीग एंड टू सी योर रिएक्शन एंड दैट्स द थिंग. इट्स फाइन. I've seen people change their perspective towards me as time has passed, but we can't make everyone happy because we are not here to do that. Agreed. 100% agreed. सबको खुश नहीं रख सकते. मुझे बस थोड़ा अजीब ही लगता है. Yes, Aqua, you're a member. Please, उमेश को thank you कर दीजिए. It'll be very, I mean, I'm sure he'll appreciate it. बहुत appreciate करेंगे. Your core audience bitches about ignoring them in chat. अरे वकार यार. वकार, तेरे को सब प्यार करते हैं, ठीक है? तेरे को सब बार बार बोलते हैं we love you. फिर भी तू गालियां देते हैं सबको. आई कमेंटेड इन अ बैंटर फैशन. ये तो सीरियस हो गया. लव मोहक. अरे आई नो मेरे दोस्त, आई नो. मैं ये नहीं कह रहा आपने कुछ कला है. मैं तो खुद टैंजेंट पे चला गया. आपकी गलती नहीं है, ये मेरी गलती है. मैं चले जाता हूँ टैंजेंट्स पे. जिम इन योर बेड इफ यू नो यू नो. कैप्स में लिख रहा होगा इसलिए मिल रहा होगा. डिस्कॉर्ड लिंक हैज एक्सपायर्ड. ऑलराइट, अभी मैं एक और डालता हूँ डिस्कॉर्ड लिंक. हाँ, ये कार्तिक ने कमेंट्स में डाल ही दिया तो आपको मिल जाएगा. Don't write in caps, yes. And honestly, as a creator, I have accepted this reality that they'll hate you any matter. हाँ, exactly. आप कितने भी अच्छे बन जाओ, ये भी कर लो, वो भी कर लो. इतनी बार आता है कि मेरे को डीएम्स आते, दक्ष भाई आए, मैंने तो आपको इसलिए ट्यूनिंग किया था बिकॉज मेरे को आर्सेनल को बैंटर करना था, बट आपके बाद तो मेरे को अच्छा ही लग गया. अच्छा ठीक है. So many times just people are only there because you either praise their club or they want to see you sad. खैर छोड़ो यार. दक्ष, ह्यूज फैन ऑफ योर कम्युनिकेशन स्किल्स. आई स्टिल रिमेंबर द jargons you used in दिव्यांश. कोपियम कोपियम. थैंक्स अक्षय, मच लव टू यू भाई. दक्ष व्हाट्सअप, क्या चल रहा है? सब बढ़िया चल रहा है. प्रदीप, आप बताओ सब कैसा चल रहा है? योर टास्क इज टू डू योर जॉब एंड नॉट कंट्रोल हाउ अदर्स रिएक्ट. दिस वे वी कैन गो अबव ऑल दिस. नो नो, 100% यार. व्हेन इट कम्स टू वर्क यू जस्ट वर्क. बट द थिंग इज ना, आई कॉल इट माई अपब्रिंगिंग या मेरे पापा की देन है. But me and my dad have always had these very deeper discussions. मैं और मेरे पापा बैठ के ना घंटे बात करते थे. मतलब मैं सुनता ही था जब मैं छोटा सा था. Where हम we would think about the simplest things कि ऐसा क्यों हो रहा है. एंड ये क्यूरियोसिटी उन्होंने मेरे अंदर अच्छे से पास कर दी. लाइक आई रिमेंबर वन टाइम वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट कि हम लोग चल रहे हैं रोड पे एंड ये
मोटरसाइकिल वाला विदाउट हेलमेट, विदाउट अ वर्किंग हेडलाइट क्यों रॉन्ग साइड से आ रहा है? क्या मोटिवेशन है इस बंदे को? डज़ ही नॉट वैल्यू हिज लाइफ? एंड इस पे हमने पूरा 1 डेढ़ घंटा डिस्कशन किया था। बहुत अच्छा लगता है। सफाई कर रहा हूँ, शॉर्ट्स में झाड़ू लगा रहा हूँ स्ट्रीम सुनते-सुनते। भाई इसी बात पे ना मोह को सब कर दो। हेलो पक्ष भाई, कैसे हो ऋषि? होप योर वर्क वाज़ नाइस टुडे। Bakar is Sakshi, nice. Anyone who uses Twitter just for trolling and abusing needs to get it. भाई, I तो just mute people. You have no idea how many people I've muted. मैं daily 2 लोगों को mute कर देता हूँ क्योंकि इतने annoying हो जाते हैं. How much does your college impact your career? I wasn't able to get tier 1 college and I regret sometimes. It's like this मेरे भाई. Um, अ- अगर आपने बास्केटबॉल खेला है ना वरुण, now imagine आपको बॉल, you have to put it in the basket, but there is a ramp which puts you closer and a ramp which puts you less close and a ramp which is there is no ramp. So it definitely helps to have a great college. It's not the biggest determinant also. It certainly helps. आपको अच्छा लॉन्च पैड मिल जाएगा. अगर आपने वीडियो गेम्स खेले हुए हैं, जस्ट इमेजिन आपका जो स्टार्टिंग गियर है वो बहुत अच्छा है. आपकी शील्ड बेटर है, आपके पास माना ज़्यादा है, आपके पास स्वॉर्ड बेटर है. एंड अगर आप टीयर 2 कॉलेज में हैं तो इट्स स्लाइटली वर्स एंड देन सो ऑन सो फोर्थ. um, it definitely helps because if you are from, I would say, a very unrecognized college, in a lot of places आपका सीवी देखते ही रिजेक्ट हो जाता है. एंड दिस इज जस्ट अ सिम्टम ऑफ द बैड सिस्टम वी आर अ पार्ट ऑफ. ठीक है, अगर मैं जाता हूँ किसी एक्स वाई जी कॉलेज ऑफ इंडिया से, इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ इंडिया जो भी है, ठीक है, और मैंने मान लो के पी एम जी में अपना CV भेजा है एज अ कंसल्टेंट, इट विल गेट रिजेक्टेड बिकॉज XYZ कॉलेज ऑफ इंडिया इज नॉट अ recognized or a known college in the KPMGs or the big 5 circles या big 4 circles. तो ठीक है, अब मुझे लेकिन KPMG में ही काम करना है. सो व्हाट आई वुड डू इज, आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम XYZ कॉलेज, इफ दे हैव placements, I will work there and I will try and build my profile as a consultant and धीरे धीरे work my way eventually to KPMG. Whereas somebody in tier 1 college directly goes to KPMG. मेरे को 1-2 steps और लेने पड़ेंगे and college में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी. देखो यार, if you get into a tier 1 college, congrats. Life is great. It's definitely not set, I will say. And if you're in a lesser tier college, मेहनत ज़्यादा लगती है. You have to prove yourself a lot more to people that, listen, I have talent, it's just the college. And this is what it is, man. So it's not the end of your life. You just have to work a little harder. You're back. Congratulations, Vandeep. As a Chelsea fan, we get the most hatred because getting named as buying success money, but they don't see how much players loan out sell. देखो man, nobody's going to nobody's going to understand your club better than you. तो आप चेल्सी हो, यूनाइटेड हो, कोई भी हो, कुछ भी हो. मैं आया था असल को बैंटर करने राशि के गोल के बाद. फिर मैंने देखा था तू आया था, मेलिन आया था और एक दो और लोग आए थे. डैडी इज हियर, बाप आ गया है, सब मैं सब देखा मैंने. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. मेलिन भाई फिर से आ जाएंगे नेक्स्ट गेम में, मुझे पता है. मेलिन भाई मुझे सिर्फ आर्सेनल के गेम्स में दिखते हैं. बोलते हैं मैंने तो लास्ट टाइम प्रेडिक्ट किया था, फिर चले जाते हैं. रेजिंग वर्क्स इन बिकॉज ट्रूप सेफ्टी वे फेमस. यार मुरसल, द थिंग इज, इट्स एंटरटेनमेंट मैन, एंड दैट्स इट. यू हैव टू बी मेमोरेबल एंड समटाइम्स मेमोरी बनाने के लिए एक ऐसी चीज होती है. वेरी फ्यू टाइम्स यू विल हैव एन इंस्टेंस जब आपने कुछ ऐसा बोल दिया हो. जैसे फॉर एग्जाम्पल, वेरी फनी थिंग, आई वॉज वॉचिंग एंग्री रैंटमैन का रिव्यू ऑफ जवान. एंड ऑफ कोर्स फनी है, अपने स्टाइल में बोलता है, बट ही सेड समथिंग वेरी नाइस टुडे जो मेरे दिमाग में चिपक गई बात. About how he was talking about Anirudh the musician and how he has abandoned all classical reasons music banane ke, and he's created music in his own way, and that is why he stands out. And it is something which stuck with me कि like, हाँ, आप टेम्पलेट और ट्रेडिशनल नहीं रह सकते, तब आप हमेशा स्ट्रगल करेंगे. आपको कुछ ना कुछ अलग तो करना ही पड़ेगा स्टैंड आउट करने के लिए. सो या, वेरी इनफ्रीक्वेंटली इट हैपेंस कि लोग कुछ ऐसा बोल देते हैं कि आपकी ज़िंदगी बदल जाती है. बट चिल्लाना, चीखना, मोहक का मेन डाउन, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको मोहक के मेमोरेबल मोमेंट्स बोलूंगा कि आप मोहक के मेमोरेबल मोमेंट्स बताओ. मोहक सुन रहे हैं इसलिए मैं मोहक का नाम ले रहा हूँ. सम ऑफ यू विल से
रीसेंसी बायस की वजह से बोलूँगा गर्नाचो वाला सेलिब्रेशन एक मेमोरेबल मोमेंट हो गया। एक वो मोमेंट जब मोहक सेलिब्रेट करते-करते वो मैट पे फिसल गया, ठीक है? और भी ठीक है, तो आप मतलब आप हर एक क्रिएटर के कुछ ना कुछ ऐसे मोमेंट्स करते हो, बट मोस्ट ऑफ देम आर वेरी इनक्रेडिबल मोमेंट्स, ऐसे मोमेंट्स जो इनक्रेडिबल हैप्पीनेस पे थे, इनक्रेडिबल सैडनेस पे थे, या बहुत चीखने चिल्लाने से रिलेटेड थे। तो ये कहीं ना कहीं तो इसका कुछ कोरिलेशन है। दक्ष भाई, डू यू हैव एनी सिबलिंग्स? नो, आई एम एन ओनली चाइल्ड भाई। 6 मार दिए कोहली ने, वाह। आई गॉट 2 एड्स इन 3 मिनट्स। भाई ये यूट्यूब कर रहा है, मैं तो आप लोगों से बात ही कर रहा हूँ, मैंने एक भी एड पुश नहीं किया। आई हैव म्यूटेड बैलन डोर वर्ड। वेरी नाइस, वेरी नाइस। वेयर आर यू फ्रॉम? आई वाज बोर्न इन दिल्ली, रेज्ड इन गुड़गांव यार। स्किल्स मैटर मोर देन डिग्री, 100%, 100%। पहली जॉब के लिए ही द कॉलेज मैटर्स, आफ्टर दैट वर्क एक्स एंड एवरीथिंग यार। कॉलेज ना, if you're looking it purely from a job perspective, then yes, but I think a good college teaches you a lot of things. My experience in Manipal and my experience in a lesser tier college was very different. मैं लकी था कि मेरे को लेसर टियर कॉलेज में भी बड़े टैलेंटेड लोग मिल गए। आई फाउंड एटलीस्ट 5-6 टैलेंटेड, रियली टैलेंटेड पीपल जो मेरे साथ कुछ अच्छा कर सकते थे। बट मणिपाल में आई वॉज सराउंडेड बाय टैलेंट ओवर ऑल अराउंड मी इन डिफरेंट डिफरेंट वेज। ऑफ कोर्स लफंगे भी होते थे, मैं खुद लफंगा था, बट यू हैड सच टैलेंटेड पीपल एंड सच इंटेलेक्चुअली स्मार्ट पीपल, आप बहुत अच्छा होता था। एंड इफ यू गो अ टियर अबव दैट, अभी जैसे मैं यूसीडी में हूँ, यूसीडी में भी अलग ही लेवल की थिंकिंग है। एंड मैं सोचता हूँ स्टैनफोर्ड में, जहाँ पे मैं 6 महीने 1 साल तक था, वहाँ पे लेवल ऑफ थिंकिंग वॉज कंप्लीटली डिफरेंट लेवल पे। तो यार जॉब के अलावा भी ना कॉलेज आपकी थिंकिंग बड़ी अच्छे से मोल्ड कर देती है, बिकॉज यू सराउंडेड बाय स्पेसिफिक टाइप ऑफ पीपल। एंड अगर आप इस स्पेसिफिक टाइप ऑफ पीपल के साथ ज्यादा घुलोगे मिलोगे ना, आपकी थिंकिंग भी वैसे हो जाती है ना। अगर आप लफंगों के साथ करोगे, आपकी लफंगे वाली थिंकिंग हो जाएगी, एंड दैट्स फाइन इफ यू कैन मेक इट वर्क इन एवरीथिंग। If you're with nerdy people, you'll get that kind of a thinking. If you're with rebellious people who, let's say, are fully into the startup system and whatever, want to build something big, then you'll have that kind of a thinking. तो ये सब चीजें तो होती हैं यार। Finished one of my biggest projects, website and employee portal for a group of companies in the UAE. Can't name them though. Best of luck भाई। दक्ष के जाने का वक्त आ गया है, it seems। अरे खुशी आ गई इसलिए? नहीं नहीं नहीं, खुशी खुशी understands. It was a proud moment to see my country Nepal play against India in Asia Cup. I really wanted our bowlers to bowl against Kohli. Yeah man, but it's fine. No, it's not beer kush. It's alcohol free. लिखा है यहाँ पे alcohol free. Saga to Barcelona, here we go. Nice, nice dream, nice career mode. All right, angry Ant-Man तो है। All right, नॉन अल्कोहलिक बियर है, एग्जैक्टली। सारे कमेंट्स इग्नोर मार दिए भाई। तेरा ही इतना पहले, तेरा जब तू कह रहा था मैं काम के बाद रिकैप देखूंगा, वो पढ़ लिया था मैंने। फिर तू वापस आया, वो कर लिया था। ही वर्क्स वेरी हार्ड एट द जिम एंड ड्रिंक्स दिस। बाबा, इट इज 25 cals, खुश, कम ऑन। 25 cals, that's less than Gatorade. All right. Is freelancing worth it? Anything that earns you money is worth it. Let me just put it this way. Anything that earns you money is worth it. Hello, Naeem Sheikh. कैसे हो? Nice to see you here, यार. आज का मनाली दी moment with खुशी दी. अच्छा. Just feeling bad for Khushi, right? No way Daksh did skip a beat when she pressed send message. Guys, it's not necessary to study from foreign. हाँ, only thing matters is the steps you take. Exactly, man. देखो, life does not end when you graduate college, man. In fact, you just start in your life and you do the things. Bro, लाइफ, दुनिया में इतने सारे कॉलेजेस हैं। टर्की में कॉलेजेस, ईरान में कॉलेजेस, सर्बिया में कॉलेजेस, चेकोस्लोवाकिया में कॉलेजेस। ये सब लोग काम कर रहे हैं ना बड़ी कंपनीज में एंड छोटी कंपनीज में एंड स्टार्टअप्स में, एंड देयर बिल्डिंग थिंग्स, एंड दैट्स इट। Life is not IIT, Harvard, Stanford only. There's so many local colleges. There's this college near my home called BIMS, and the guy who graduated from there runs a fantastic consultancy business in Dublin. It's a music school, bhai log. Come on, it doesn't really matter. I mean, again, it's not the be all end all. 25 cals. Yes, it's 25 cals. um I to feel in the current world, college etc. does not matter. Job, if you have great skill, you can get a good job. Seen many people go from हाँ personal business भाई बहुत है.
अब तो people, there is this guy, okay, what's his name, some Bilal, okay, on Twitter, Mushtaq Bilal. He's a PhD graduate. He used to be a teacher. I don't know if he's still a lecturer. The guy Mushtaq Bilal only tweets about advice to PhD students, has a consultancy and online course business, and he earns over 100, 200K. People make their own stuff, man. Anyways, uh, सही याद दिलाया तुमने यार उत्कर्ष, सही याद दिलाया. Last के 20 minutes है. Let's play Tiki Taka Toe, and we'll play it in a different way, man. अभी हम cross and knots तो नहीं करेंगे. Let's try and fill this as much as possible. I will take your help as usual, but we have to do it एक नाम एक ही बार, unless absolutely impossible. For example, if Arsenal United में player use कर रहा हूँ Alexis Sanchez, and मान लो आगे चल के ग्रिड में Arsenal United आता है, we cannot use Alexis Sanchez again. All right, try to fill it as much as possible यार. करते हैं, चलो. टिम्बर आर्सेनल कोई कह रहा है आयैक्स. ओ सॉरी, टिम्बर आयैक्स. आर्सेनल आयैक्स कह रहे हैं टिम्बर. मैं भी यार आज नॉन अल्कोहलिक भी चढ़ गई है मुझे. मेरा कमेंट लेना. ओ याद आया, जस्ट सिटी एक्स्ट्रा का एक बंदा डबलिंग का है. नहीं, आई हैवंट सीन हिम. नाम भूल गया, मेरे को याद नहीं, मेरे को बिल्कुल याद नहीं. Alright, let me put myself here. Let me hide this comment here and let's play. Alright, hide the ads, man. Hate ads. Okay. Milan and Serbia. Is Rebic one of them? Oh, Rebic is not there. Rebic फिर क्या है? Croatian है. कौन है ये? Okay, fine. Serbian and Ajax. Alright. और बताओ. Let's figure it out. How quickly we get this. Arsenal and Milan जो खेला हुआ है. Flamini. Serbian at Man United, Matic. Yeah. Euros and Man United can be Mata. Has Mata won it? Of course he's won it. Ajax and Euros. Ajax का कौन सा player? Tadic हो गया. Euros Man United, Casemiro. Casemiro? What? Oh, Cristiano, sorry. Cristiano, yes, of course. Yeah. How can I forget? Cristiano Ronaldo. What? अरे मैं Ajax वाले में क्यों डाल रहा हूँ यार? हो तो गया ये. Um, ओ ओनाना आयैक्स यूनाइटेड हो गया. ये बताओ, आयैक्स एंड सर्बियन आयैक्स प्लेयर. ये हो गया डोना. कूल, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी. सर्बियन मिलान, सर्बियन आयैक्स एंड यूरोज आयैक्स. Cruyff? Nah, it's not Cruyff. Luka Jovic. Good shout, man. Good shout. I think गेम खत्म हो जाएगा अभी. P2 टर्न है ना, इसको स्किप करके. Yes, Luka Jovic. Cool. Shevchenko, Tadic, Ajax. Tadic. Oh yeah, Tadic. Fair shout. Tadic. And finally, Euros and Ajax. Google मत करना. सोचो. Euros and Ajax. कुछ तो निकलेगा. Frankie, has he won the Euros? I don't think Netherlands has won the Euros. Van Basten? When did Netherlands win it? Berghuis? He's also Dutch. Van Basten? चलो Van Basten try करते हैं. And it is Van Basten, yaar. Congratulations. Thank you so much, heroes. Let's play another one. All right. I will try. So the way the game will work is I will try to get the majority. And if I don't, then you guys will have to help me. All right. Man United, Copa America. Rojo maybe because Argentina won. He did not win. All right. Man United, Copa America. Alexis. Of course, Alexis.
इंटर कोपा अमेरिका कोरिया. नहीं, कोरिया डिड नॉट विन. वाज इट वाकिंग कोरिया? एक दूसरा कोरिया था. यस, वाकिंग कोरिया. फेयर भाई. All right, let me see. Inter Juve. Lukaku did not play. Pirlo did not play. Was it? Did Patrick play for Inter? हाँ. ओके, इसको बाद में करते हैं. इसको बाद में करते हैं. पहले खुद चेल्सी यूनाइटेड माटा कर लेते हैं. फेयर इनफ. बेनफिका चेल्सी एंजो हो गया. फेयर इनफ. यूवे बेनफिका नहीं पता. कोपा अमेरिका बेनफिका. नहीं याद. Was Tagliafico there? Was Daly? नहीं. यूवे के मैंने यूवे पॉगबा. यूवे इंटर मैन. यूवे इंटर कितने मैंने कर लिए हैं? 5. एंड आप लोगों को 4 में हेल्प करनी है. ऑल राइट. डी मरिया यूवे बेनफिका. गाचा गाचा गाचा. फेयर शाउट. फेयर शाउट. पिरलो इंटर यूवे. इंटर में नहीं यार, वो पिरलो इंटर में थोड़ी था. Zlatan. Good shout, man. Good shout. Zlatan. All right. Copa America, Benfica, Otamendi. All right, let's skip this turn and Otamendi. Fair, fair, fair. And last is Chelsea and Inter. Arey, iska to yaar, of course, there is. My God, the Lord. Lord himself, Victor Moses. All right, next one. Okay. Barca, Arsenal, Cesc. Croatia, Arsenal. Croatia, Arsenal. Suka? Suka. I think there's only one Croatian who has only played for Arsenal, yaar. Liverpool, Barca हो गया. Coutinho maybe. Yeah. World Cup and Arsenal. Let's go finally. World Cup and Liverpool. Who's the World Cup winning player for Liverpool? Who is Spanish? Thiago? Oh, he did not win the World Cup with Spain. Villa. Okay. McAllister, man. McAllister. World Cup and Lazio. Very interesting. Croatian and Lazio. Milinkovic. He's not Croatian. He's maybe Serbian then. Barca and Lazio. Croatian and Liverpool. अरे यार, Croatian and Liverpool. Skirtle. Martin. Fuck man. कौन था Croatian Liverpool में? Halilovic. Markovic. Oh no. मैं भाई बहुत बड़ा चूतिया हूँ. Okay. Let's see. Lazio and World Cup is Pedro. Good shout, guys. Good shout. Lovren. वही तो फ्लैग याद आ रहा था, प्लेयर नहीं याद आ रहा था. All right. Let's get to Croatian and Lazio. Lazio Croatian. Jovic. Laudrup is Barca. Okay. Did not know. Wasn't Laudrup in Madrid? अच्छा, मेरे को तो गलत ही लग रहा था. चलो कोई बात नहीं. Let's go to the next one. All right, a Belgian player at Arsenal is Trossard. A Belgian player at United is Lukaku. Not Jordan, bhai, Romeo. Belgian player was Aiden McGeady. Where is McGeady, bhai? मगरात ये क्या है? अच्छा चलो फ्लोरियन थॉवेन कर लेते हैं. Oh, Thorven was French, yes, not Belgian. All right, no problem. हम इस पे वापस आएंगे.
आर्सेनल एंड नाइजीरियन बिग, वो भी भाई बिग, वो भी यूनाइटेड एंड नाइजीरियन, यूनाइटेड एंड नाइजीरियन कौन था? 69 watching boys, let's go. Nigerian at United. John Obi Mikel. Just kidding. Nigerian at United. Who was a Nigerian at United? ओनाना नहीं है, ओनाना तो कैमरूनियन है. चलो बाकी देखते हैं. यूवे आर्सेनल, रैमजी हो गया. यूवे यूनाइटेड हम पॉगबा कर चुके हैं. और कौन यूवे यूनाइटेड कर चुका है? लुकाकू हम इस गेम में कर चुके हैं. और कौन यूवे यूनाइटेड है? डी मरिया कर लेते हैं. ऑलराइट, ऑलराइट. A Belgium at Marseille, a Nigerian at, चलो 5 कर लिया. I beat you guys. Odin Igalo, yeah, Igalo. How can I forget? Legend. All right, Marseille वाला कर दीजिए. अब बताइए. रोनाल्डो हैं? ओ या, यूनाइटेड एंड यूवे वाला. गुड शॉट, गुड शॉट, गुड शॉट. बाई, बाई नाइजीरियन था. डिड नॉट नो दैट. ओसीमैन, ओसीमैन कहाँ है भाई? ऑल राइट, बेल्जियन एंड मार्सेई, नाइजीरिया एंड मार्सेई, एंड यूवे एंड मार्सेई. ओसीमैन किस में है? ओसीमैन नाइजीरियन है. वाज इन मार्सेई? अच्छा, डिड नॉट नो दैट. नहीं, इट्स नॉट, इट्स नॉट, इट्स नॉट. इसमें था. इट्स नॉट, इट्स नॉट, इट्स नॉट. ऑफ कोर्स है, नाइजीरियन है तो एक ही में ही होगा. बाचुआई मिची. गुड शॉट, थैंक यू सो मच लॉर्ड्स. और इधर बताइए. What else? Denier हो गया. We've done Michi. We've done Michi. Ow, my legs, man. Juventus, Marseille, Milik. Good shout, man. Milik. गलत. ये रेनेसू, man. रेनेसू, man. रेनेसू. Zizou? Guys, come on. Come on. यूसुफ डेमीर. ओ वेट, जीजू तो इधर आएगा ना. मैं क्या कर रहा हूँ? डेमीर नाइजीरियन तो नहीं है. डेमीर का नाम ही नहीं आ रहा है इसमें. अजीब बात है. हाँ, मिलिक नापोली में था. सही बात, सही बात. सोचो गाइस. I'll reduce this. A Juve Marseille and Nigerian Marseille. Don't Google. If you skip it, we skip it. Deschamps. Did he Deschamps? Did he? Oh! Nice. Nice Googles. मैंने नाइजीरिया में डाला था मिलिक. Are you sure? Okay, I'm sorry if that was the case. राहुल की तो 100 हो गई गाइस. वो ऑल राइट. मार्सेई एंड नाइजीरिया भाई. मार्सेई एंड नाइजीरिया. मार्सेई एंड नाइजीरिया. Was did John Obi Mikel move here? और कौन नाइजीरियंस है यार? बताइए लॉर्ड्स. Are you guys saying bye? Really? Okay, let me try bye. Not bye, man. Ndidi, let's go. Ndidi होगा, Ndidi होगा. Was it here? Ndi हैं? Ndidi क्यों नहीं दिख रहा है इसमें? NDI.
एमिनेंडिका, एनडीडी क्यों नहीं है? विल, फ्रेड बोनी, काबलेरो, गालास, होजे, कीन, कॉस्टन, लिपिंस और Zaha, Wiltord, Young. Ugh. No NDD, guys. Unfortunately, no NDD. What the hell? Sam Obisan. यार एनडीडी नहीं देख रहे. चलो नो प्रॉब्लम यार. लेट्स स्किप दिस वन. लेट्स स्किप. End as a draw. Yeah, we'll end it as a draw. Don't care. All right. An Arsenal player who won the Euros is Santi Cazorla. United and Arsenal में Robin Van Persie. आर्सेनल जर्मनी हम मुस्ताफी कर चुके हैं. पर मेटेसाके कर लेते हैं. चलो. These three are done. Now United Juve again. Let's do Cristiano this time. Juve and Euros. Chiesa? Cool. Germany and Euros? Muller? Oh, Thomas Muller has not won the Euros. Damn. Germany and PSV, United and PSV. PSV से United में कौन? Memphis आया था? Yeah. All right, we've done 6. We're left with 3 यार. Come on. Germany and Euros, Ozil? You sure? Oh no, Juve Germany करना है. मैं मेरे ना ये ग्रेडिंग क्या हो गई मेरी? Juve and Germany. A German who's played for Juve. A German who has played for Juve. है तो कोई. A German who has played for Juve. And a German who's won the Euros. Sorry, a German who's played with PSV. And a PSVN who's won the Euros. Germany, PSV, Goretzka. You sure? I think Goretzka तो पहले ही बुंडेसलीगा में खेलता था यार. हाँ. एमरे चान. यूनाइटेड पीएसवी आरवीडी. तो चलो डिपाई हो ही गया. माइकल शूमाकर. जर यूलो रूडी वॉलर. रूडी वॉलर भी नहीं है. विराट कोहली की भी 100. भाई 1000 मार दिया. अरे बाप रे. 1000 तो बहुत ज्यादा ही हो गया यार. गोत्स. ओहो. सही है, सही है, सही है. गोत्स पीएसवी. मैंने गलत जगह कर दिया. मैंने गलत कर दिया. बट थैंक यू सो मच भाई जिसने भी गोत्स बताया. ऑलराइट. अ पीएसवी प्लेयर हुज वन द यूरोस. A PSV player who's won the Euros. Juve, Khedira. Yes, Khedira definitely. All right, final one. PSV and Euros. एक PSV में कोई जर्मन खेला हुआ मेरे को तो याद नहीं आ रहा यार. यर्गन कोलर. अच्छा. नहीं ये तो इसमें तो नहीं है. PSV player who's won the Euros. A PSV player who's won the Euros. A PSV player who's won the Euros. A Dutchman. An Italian. Not a Dutchman. A Spanish or an Italian. जो PSV में खेला हुआ है. कोमन, क्रॉइफ. एरविन कोमन भाई. एरविन कोमन. मुझे नहीं पता एरविन कोमन कौन है. बट रोनाल्ड कोमन तो नहीं है. और कोमन. हाँ. एरविन कोमन भाई. एरविन कोमन. आई हैव नो आइडिया हु दैट इज. गलती से सही हो गया. ओह आई हेट लाज़ियो. मैं नहीं कर रहा. आई एम स्किपिंग दिस वन. ऑलराइट. दिस वन स्टिल समथिंग वी कैन डू. ऑलराइट. लेट्स डू a player from Monaco to Liverpool. A player from Monaco to Liverpool. अरे है तो इनका फाबी. A player from Argentina and Liverpool. Aquilani. Oh, Aquilani नहीं था. Sorry. Rod Lopez. Maxi Lopez. ये भी नहीं है. तो वो अकेलानी था. लोपेज था. या मैंने किसी गलत करियर मोड में देख लिया. एन अर्जेंटीनियन.
ये तो चलो मैकलिस्टर तो है बट मैकलिस्टर नहीं करना है मुझे। मैकलिस्टर के अलावा और कोई नहीं है? हाँ? मैकलिस्टर के अलावा कोई नहीं है? विल डू इट एट द एंड। मुझे मैकलिस्टर करना नहीं बिकॉज़ वी ऑलरेडी यूज्ड इट वंस वर्ल्ड कप विनर के लिए, बट ठीक है। चेल्सी एंड मैड्रिड। ओके, चेल्सी ये तो एन्जो हो गया। ठीक है। वो नहीं, एन्जो हम एक बार कर चुके हैं। काबाएरो करते हैं, चलो विली काबाएरो। Chelsea and AS Monaco, of course. Timue, Timu, Bakayoko, Bakayoko, Timue, Bakayoko. एक और लिवरपूल अर्जेंटीना तो देख लेंगे। बायर्न एंड रियल मैड्रिड, क्रोस, टोनी क्रोस। um लिवरपूल एंड रियल मैड्रिड, लिवरपूल एंड रियल मैड्रिड, लिवरपूल एंड रियल मैड्रिड। Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Mm-hmm. I need one more to beat you guys. One more. McAllister के अलावा. Chelsea, Real. Kepa. All right. Let's do. Ah, yes, of course. Xabi Alonso. Xabi Alonso. Okay. Liverpool, Argentine. McAllister के अलावा किसी को पता है? McAllister के अलावा किसी को पता है? Mascherano. Good shout है जिसने भी दिया Mascherano. All right. Bayern and Monaco. Let's do Bayern and Monaco first. Bayern and Monaco. Manchester आनो शर्म करो भाई शर्म करो कैसे हो सिटीजन नाइस टू सी यू हियर मैक्सी रॉड्रिगेज मैक्सी लोपेस था हामिस रॉड्रिगेज यस हामिस रॉड्रिगेज गुड शॉट हामिस रॉड्रिगेज now Bayern and Argentinian a Bayern and an Argentinian wow I can't place a Bayern and an Argentinian Bayern and Argentinian भाई एक बायर्न एंड अर्जेंटीनियन हाइंजा खेला था क्या वो बायर्न के लिए खेला ही होगा एक्चुअली नहीं गैब्रियल हाइंस नहीं है कैन यू थिंक ऑफ गूगल मत करना हरामियों गूगल मत करना मेरे को डिफेंडर लग रहा है यार कोई था डिफेंडर स्ट्राइकर नहीं था मिडफील्डर शायद से था डिफेंडर लग रहा है गोलकीपर तो नहीं था गोलकीपर तो कान था उसके बाद आकर ये आ गया बीच में एक दो और आए थे छोटे मोटे आ गया टीमी कैलिस कहाँ है टीमी अरे उसकी स्पेलिंग क्या है यार मार्टिन डी डेमिकेलिस ठीक है लेट्स गो किसी ने बोला था टीमी कैलिस यस वनदीप नाइस टॉनमॉय यशपाल नाइस दो ही हैं अच्छा डैम चलो लास्ट वन एंड देन वी एंड इट बार्सा एंड रियल मैड्रिड ऑफ कोर्स मिस्टर पिग हेड भाई रोनाल्डो फिनोमेनो भी हो जाता है इसमें रोनाल्डो कर लेते हैं एज कौन सी थी इनकी ये वाली थी तो कौन सा रोनाल्डो दूसरे रोनाल्डो ये वाली अरे मैं गलत पे क्यों कर रहा हूँ यार चूतिया है क्या तू वह
ठीक है। अब सर्बियन एट कोवाचिच, इज कोवाचिच सर्बियन? नो, मॉडरिच क्रोएशियन है, कोवाचिच भी उसी का ही है। एनीवे, अब ब्राजीलियन एट चेल्सी थियागो सिल्वा, a player who played for Chelsea and Barca, Marcos Alonso. ओके, दूसरा वाला मार्कोस अलोंसो भी चल लेता। अ प्लेयर ब्राजीलियन एट नापोली, फिलिपे एंडरसन। नहीं, वो था लाटियम में था, वो नापोली में नहीं था, वो लात्सियो में था वो। ब्राजीलियन एट नापोली, एक कोई लुइस वुइस होगा यार, डगलस वाला कोई होगा, पता नहीं। ओके, करते हैं। हाँ, क्यों लग रहा है? ऑलराइट, अब बार्सा एंड नापोली, डिएगो। A Serb at Madrid, a Serb at Chelsea, a Serb at Napoli, and a Brazilian at Napoli. All right. डी लोरेंजो तो इटालियन है यार। किम मिन जे का रिप्लेसमेंट लूकिच, ये नाम है उसका? नहीं, कोई और नाम है उसका। सर्ब एट मैड्रिड, लूका योविच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इसकी स्किप करते हैं। कूल। A Serb at Chelsea, Matic. Cool. A Brazilian at Napoli, a Brazilian at Napoli. Juan Jesus. Good shout, yeah. Juan Jesus. Good shout, good shout. And finally, a Serb at Napoli. A Serb at Napoli. Is Di Lorenzo a Serb, really? I don't think so. He's an Italian guy. Naam hi D hai. Is Tadic a Napoli player था? हाँ, नहीं। Napoli and a Serb, भाई. Last Napoli and a Serb. Zelensky? Piotr Zelensky तो यार पोलिश है। Hamsik? Hamsik. Nice. Marek Hamsik. Oh, no Hamsik here. Sorry. Retired maybe, that's why. I don't know. Makismovich. Yes, finally. Thank you. Makismovich ho gaya. Makismovich ho gaya. All right. Thank you so much all, yeah, for stopping by on my stream. कल के लेग डे के बाद जो हैमस्ट्रिंग सी मरी पड़ी है ना। एनीवेज, yeah, thank you so much for coming. Yeah, अच्छा लगा। 59 people are still here. Enjoy the rest of your day. Enjoy the cricket. Enjoy the football. Enjoy the other people's stream. Like कर देना वीडियो को। मैंने ज़्यादा इस बार करा नहीं है स्ट्रगल। 100 plus likes हैं। So appreciate that. Thank you so much for coming. बाद में मिलते हैं। See you tomorrow. See you tomorrow. See you tomorrow for some stream, hopefully. I don't know about what stream though. देखते हैं। चलो, मिलते हैं बाद में। See you. Bye bye.